Popping those stars. Save. Smart play there by Scout. Riju just shooting at the smoke, seeing if anything connects. And here comes the push off the 7 against Damwon Kia. You know, Damwon Kia is gonna have those DBS at the ready. तो अभी ये लोग बूथ तक जा सकते हैं. split है bro. Wow. Excuse me. The aggressive team. Oh, top four, top four. Damwon Kia Top 4. in Alpha 7 just slowly but surely. Alpha 7 ने push कर दिया. ये अच्छा कर रहे हैं. That they're currently showing. जितना aggressive ये तो open पड़ा है ना prestige इनसे. भाई जोन में नहीं है यार ये. अरे गया. Scout भाई. Ends up knocking him. कौन बचा? Just Alpha 7 is too much. Second आएंगे एक बचा अगर ना. वो prestige ने नहीं मारा सारा. तो. Brazil, it's crazy. अरे! top 3 आ गए. Build ticket booth. Revo is just on. वो बच अरे गया. अरे कूद गया. Boom net. He comes अरे top 3. really on point here. Finds Sarang. And 7 अरे उसने ही मार दिया. This is gonna be Alright, yeah. alright, even if they don't end up getting chicken dinner. बढ़िया. Prestige. Carry रोने दे दिया. Carrillo. GG. ends up getting Alpha 7 ये डर के नहीं खेल रहे. पता है क्या? डर के मतलब in the sense aggressive खेल रहे हैं ना सोचे. of today showing अपना game खेल रहे हो. first place. Look at my Mafioso right there. They're gonna आया first match देखते They हैं. told me that they wanted to continue to stay at the top. ये first They नहीं था? really Sanok wanted का to Sanok. get this Sanok का start. अरे ये first था bro. More information and push. अरे first. Revo is तो missing fun match Fun देखते match. हैं आज. यार एकदम स्टार्ट से मत लगाओ. एक जोन बनता है उसके बाद लगाओ. बता रहा. इसमें टाइम नहीं दिखा रहा है. मैच रैंकिंग दिखा रहा है सीधा. नहीं अरे Hardford zone से लगवा दे यार. वो फिर 47 36. नहीं इतना पीछे से नहीं. फेज 3 15 12 या 15 से देखता. वही मैं कह रहा हूँ आगे आ जाओ. 40 37. angles and you don't ये वाले जोन से देखो. ये वाले जोन से रुको. ये वाले. बता रहा हूँ. जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजी है. 40 37 में भी हूँ. हाँ ठीक है. जैसे ये मैप चेंज होता है वैसे ही वहां पे जाके पॉज करो. ठीक है. जैसे अरे मैप जैसे हटेगा ना वैसे पॉज कर करो. एक साथ प्ले करो. इन गेम टाइमर क्या है ऊपर? अभी आने का है मेरे इसमें. हाँ सेम. 00 30. ठीक है. हाँ whatever. और मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है यार. Clock कर दिया हमने. समझ नहीं आ रहा. Interesting things is that we have these two compounds. They are in play, and the two high ground and low, or the one high ground compound, one low ground compound. Risha Sharma, hello bro. Above the bridge on that southern side is really interesting and could take a lot of control now. हैं, Raven क्या हुआ is सामने? pushing, and top is the last player for Stalwart. वो अच्छा नहीं. We're just looking on and seeing right now. 7C is being able to get some revenge there on what happened to his teammate earlier. Saran being able to spot at least her from dead eyes. Is he going to be able to spot up Joker? Oh, the grenade ends up bouncing on the top. Did he realize that? I think he did. He started backing off a little bit, and this is how action ended up getting eliminated to Ravenclaw from Vampire Esports. There you see Dead Eyes, sir. मस्त नेट डाल दे Sarang एक. Saran get this nade and just ultimately get the Ilum. They are going to be getting pushed by the zone. He is able to cause some damage, but he's not able to क्या है तो अपन get the इसमें? elimination. It's gonna be First match में top First 3. match keeps में? going from tree to tree. नहीं अब तो चल रहा है इधर क्या सब. सैनोक मेरे. Something here. Shots. अभी खत्म दोन दो. Just a little bit. Salang can move with the circle and then maybe take on 4 रन बचा a है. little bit later. I think it's Kill unfortunate मिला उसे. for on top. He's gonna be. कितनी टीम रहती है इसमें? सिर्फ 1 2 3 12 सिर्फ 12 क्यों? Lost one player. Fabian on the ground. Kirill also knocked and Revo further away. एडसेंट तो भारी है एकदम. ओके. स्ट्रीम नेट सब सही है. Ash we miss you in world stage bro. I miss myself in world stage as well. I think Kirill is gonna go down though. And it's We miss Ash. one. Fabian still alive. Revo with Goal, battery. Hashtag Bye. justice for hash. Those nades rain. I think Oh, कसर. relays इधर ही हो गया. Here close by before he ended up getting fully eliminated. And this is going to be an interesting one. Hashtag 17 point lead lost. 17 नहीं 9 पॉइंट था ना. We can joke about it now. This is a show match or not. Oh. I think it's sort of having that. अच्छा. Guess what? U7 Team Falcons powerful are going to try to third party the divide. Forrest with the DBS, can he get some shots? He's able to get some shots. In First knock, can he get the in second both knock? the both the lands. Both the A lands. little bit of damage by the nades, and Oh, ultimately Falcons. powerful from Falcon. No. Too much with those nades, and now Revo's looking मेरे को 2M लग रहा है. इससे कहीं वेट नहीं हो रहा. जो क्या है? some Illims from Team Falcons. 6 nades now.
मैंने खा लिया भाई Dominates मेरे मैं तो Remo, बोल and रहा he's हूँ भाई continuing बहुत this बढ़िया है तुम लोग artificial red zone. ब्रो मेरा फेवरेट है सोर क्रीम एंड Two ऑनियंस gets in आओ hand for powerful two. सिंपल एज दैट Yusuf is gonna वो try to get अबे some more information. Wish maybe more of a एक्चुअली blood दही flow. का दही बाप वही दही वाला फ्लेवर है So he will be moving पता है around नूडल here. मसाला मतलब मैगी भी पसंद है Try to किसी get को a bit more नूडल structure. मसाला भी है New याद है group हम बचपन में मैगी मसाला खाते थे northwest, ये and it basically only has one compound. एफ 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 9 हां Basically मैं तुम सेम भी है याद ना मत दही दिलाओ पापड़ी यार next to. दर्द And होता yeah, है that's the huge question is how does these दही teams है in the east side भाई मेरे बंदे यूट्यूब के तो एकदम सीरियस होकर देख रहे हैं, कोई चैट भी नहीं कर रहा, ये मैंने पहले बार नहीं खाया मैं पहले कभी नहीं खाया एकदम सीरियस पहली हो बार गए। है realize they have to, otherwise they're not gonna catch a break with that. Circle is closing in just 10 लियो seconds. लियो शाउट आउट लियो Powerful. लियो, S2G on straight head to head, all push towards बस Red. गेम ला दो। Maybe a bit का मेन चीज पता है ना आपको creep कि towards बेक्ड है हाँ, राइट नहीं terrain is just running out here. तो हेल्दी भी हो गए ये Found a decent spot to survive for some time here outside the border. He's gonna be fine with that. हमारे सबको खुद को भाई फैल्कन रेस्ट इन पीसेस। Sent off the zone. Fluke finds Joker. राइट वाला भी These guys are अरे भाई वो limited by सबको नहीं पता है सौम्या चिल Falcons does have one player down. He's वो gonna मिस try जाएगा to get out of this. He's ultimately not able to get out. S2G वो मिस is जाएगा bringing 9 in इज the आर elimination. अनलकी नंबर Eliminating ज़्यादा the order थोड़ा। Falcons while they're at it too. And you were talking about the Galaxy. They are well positioned within that compound as Silas does end up getting out of Revo with the big rotation earlier, deciding to back off. That ultimately ended up paying off in a big way. And he might be able to get some elims. And guess what, Calcy, can you get out of this? You are gonna have Revo looking at you. Can मेरे को भी Revo शाउट आउट दे connect? दो भाई शाउट आउट टू शैन बाज Big question mark, and ultimately Oh my he God. can connect. Revo. Kai Baz. भाई 3 elims Yeah. to himself. वरुण Top better. एफएफ, just better. टॉप 4 तो आ हेलो ही जाएगा हितांश, इसमें हेलो हितांश खुराना, हेलो। Yeah. दो वाले में इसमें वही है एक नॉक निकालो फिर दूसरे वाले पे 1v1 के लिए घुस जाता है We're down to just 4 teams. Zarate able to get that 5th place elimination. Getting पैसा 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 पैसा। Vampire actually in a pretty decent spot here. Lord We can knock see खा the लिया next था। circle has popped top right of That's the a huge opening. actually slightly inside. पीछे से पड़ेगा बेचारे को, Galaxy have to move out. Ravenclaw finds Lord, and that's a huge बड़ी opening. पीछे है, बोला ना पीछे से No पड़ेगा। बाप रे। sign for them. They इतना have to open send खेल this रहा in है and they could 6 finish पैकेट off that बाप रे potential elimination. एक फुटेगा अभी। That's exactly माना मतलब माना कि बेक गया। हेल्दी है ओ, बट ओ, 6 पैकेट This is going to be 2 players from Vampire Esports. Ravenclaw does end up getting some damage. Grossa in hand. Fluke. मेरे डाइट में अच्छा है Come the nades. Is Amodi going to be able to hear where? भूख लग जर्सी पे लिखवा दो 9 ब्रो करना पड़ेगा एक शाउट क्या पता हितांश, फिर हेलो लक चल जाए शाउट हमारा आउट ब्रो। थोड़ा Ravenclaw able to भाई पढ़ाई कर लो, हर्षा पढ़ाई करके ही यहाँ पे पहुंचे। just backing off का- and while काफी कब स्ट्रीम करेगा ये Want सब to लोग see OG इंटरनेशनल, मुझे भी in Revo and Saran. मुझे भी देखना चाहता हूँ। ऐसा रिप्लाई कर मैं करता हूँ That's exactly what they're doing. They're positioning themselves कटा to be नेक्स्ट टूर्नामेंट में after this fight. 9 पॉइंट्स मेरे लाके माइंड में है क्वालिफाई हो बट जाएगा, कुछ डोंट इशू आ वरी। रहा था Just so many third parties. ओ वॉश के लिए Yeah. भेजिए जर्सी Matches that we saw yesterday. Saran playing it patiently. I wish he would use this time to actually Oh. find some kind of दो push कौन खेलता and get himself a मैं और better सौम्या location. That could be a good nade. Could have been a good nade. सारंग देखना जोन में, अच्छा Spot Saran. सारंग पानी में डूब के मर जाएगा। मैं हाँ और- बता, सब रिवील कर दो। अरे यार बेचारा पानी में मर जाएगा A यार। bit longer here, but it could be 7 C's giving his life up. in एज this ओरंगुटन and it's gonna be को a स्लॉट 1 होता हुआ ना हाँ वो भी है वो गया भी सारा। है। हाँ डूब के नहीं मरा, गॉडल गैंग यू आर रॉन्ग। अरे 3 दिन ना अलग अलग इसमें घुमा घुमा के खेलते दिक्कत क्या है? और क्या सब अच्छे हैं अपन ऐसा भाई मेरा एक भी प्लेयर किसी से कम नहीं है ठीक है कोई भी खिला दो भाई क्या वन साइड reply मत ले दिया? भाई। Plus the guaranteed top 3 here. That is also 5th for 3rd place. So it's 10 points for them in this game so far. Six. Guaranteed. And they're looking हाँ भाई भाई, ऑब्वियसली 6 मैन है भाई, 18 के वजह। अरे भाई चलता है, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तो ज्यादा होगी, डोंट वरी। टाइम दो थोड़ा। एनजीए सेकंड आईटी इसमें मेरे साथ तो कोई स्ट्रीम डुओ खेल ही नहीं रहा ऋषभ खेलेगा भाई थोड़ा ढूंढो वीपी का चिकन, हाँ वो तो दिख रहा है। कह रहा थोड़ा ढूंढो पार्टी हाय एग्जीक्यूशन ट्राई करो अच्छा थोड़ा। लाइक कर दो, लाइक कर दो। 2v1. We saw what हाँ, happened बस yesterday. We मैं had बता seen दूं। teams and players being able to clutch that 2v1. Can Hamodi do it here? He's not going to be able to do it. Way too Hello. much. नहीं आया अभी तक 5 मिनट में होगा आओ यार कुछ देखता है तब तक इंट्रो कर दो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू गाइस। ऐसा तन्मय भाई कर देना। आज भानुशाली हेलो ब्रो व्हाट्स अप
अरे तन्मय मेरे को रुको तो ना रुको ऐसे कुछ कुछ देखते हैं डिस्कॉर्ड पे लाइव करके। मीम चैनल नहीं है अपने ओरांगटन का? क्वालिटी बट खराब है अच्छा ये। नहीं, क्वालिटी खराब आएगी। अभी अभी कुछ ऐसे ही वीडियो देखना है ना, जैसे टाइम पास रिएक्ट करने के लिए ऐसे मस्ती में, तो वो कर सकता है। करो करो करो। कोई है चैट? चैट में सजेशन मांगो ना, चैट चैट बताएगी। भाई बताओ भाई चैट में क्या किसका देखना है? टीम के क्या पार्टनर करना हैं, है बताओ ठीक है भाई। भाई, ठीक है। ओके। क्या यस। करना है मैं बताओ। क्या कोई ब्रोकर बनेगा मेरे ने? मैं तो नहीं। विनय हेलो ब्रो, फर्स्ट व्हाट्सअप। बेस्ट प्लेयर इंडिया हाउ अकॉर्डिंग टू आर यू। यू? एस ब्रोकर को हाँ, हिंदी में क्या कहता है? बहुत है भाई। अरे वो ऑलमोस्ट सभी है। किस चीज पर रिएक्ट करे भाई बताओ। ब्रोकर को हिंदी में हाँ दल। आ, 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 हाँ। आ, हर्ष हेलो भाई, कैसे कैसे हो भाई हर्ष? दल। हाय प्रणव। वो एक के भी नहीं है, वो स्टोरी अलग ही है उसकी। बहुत दल्ला अलग दल्ला ये तो क्या होता है ब्रो? टेक्निकली वो मेरे हुए अब। बड़ा भाई तुम हर्ष, आई एम गुड ब्रो। कहाँ से हम आया को था गुड वो भाई। स्ट्रीम कर रहे हैं बस। गेम नहीं है वैसे, वो थोड़ा दर्द करता है सुबह रात दिन में। Jonathan or Goblin, who is best? Choose only one. AKOP. इजी बिजी। बताओ भाई क्या करना है। अरे कोच बता ही नहीं रहे। अरे कोच। तुम चैट डेडली में कोई टोक्यो बंदा, खाए हो? चैट में चैट कोई बता ही नहीं अलग रहा। चलती है, चैट अलग चलती है, सीधा बेस्ट प्लेयर पूछती है। चैट भाई ठीक है भाई, चैट। भाई बहुत यमी है। ये एको कौन कर रहा है बे? वही ना। गंदा है को। दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। वेरी। हाँ मैं वीडियो भेज रहा। मैं मेंबरशिप वीडियो भेज इनेबल रहा। भाई, मैं महीने में एक मैं बार वीडियो तो भेज लाइव रहा, आता रिएक्ट हूँ। करो। मेंबरशिप इनेबल होकर क्या रुचिर हुआ? वीडियो भेजा है, उस पर ऐड करो कह रहा है। अपना ओजी का वो फोन नहीं बगल है में मीम फोन होगा वो विस्के देखते हैं। विस्के पे आवाज आ रहा है कि एक बार चेक करो ना रुचिर, अरे उसकी ओजी खुद का की। मीम जोन नहीं है क्या? मैं भेज रहा आपको व्हाट्सएप पे। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। व्हाट्सएप पे रिएक्ट करेंगे क्या? भाई बेस कुछ भी करता है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे रुचिर को बोलो रुचिर डांस एक करना है। रुचिर एक वीडियो नहीं सजेस्ट कर भाभी रहा ने है। थोड़ा अभी फेस कैम लेफ्ट साइड कर दो। पक्का? सॉल्टी न्यू वीडियो। उस पे रिएक्ट करो बोलते हैं। यू लूज इफ यू लाफ 10 टाइम्स, ये करना है क्या? आ जाओ ये गाइस, बोल रहे हैं कि सॉल्टी की न्यू वीडियो पे रिएक्ट करो। आ जाओ गाइस। किस क्या करना है बताओ। यू लाफ यू लूज। किस चीज पे? डिस्कॉर्ड पे उनको दिख नहीं रहा होगा। मैं नहीं रुको रुको, लाफ करता ब्रो। मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, मेरा बहुत लाइव गेम नो ज्वाइन करो, गेम स्टार्ट। लाइव ज्वाइन करो, लाइव ज्वाइन करो। आपका डिस्कॉर्ड का? हाँ लिंक दे दो ना फिर। डिस्कॉर्ड उधर कैसे दिखाना है? डिस्कॉर्ड डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर दो। स्ट्रीम क्वालिटी 720p करके रखा है आपने? अरे वो वैसी ही है, उतनी है वो, ये इसमें बूस्ट नहीं है ना। रेडी? हाँ रेडी। एक सेकंड एक नहीं नहीं सेकंड। नहीं नहीं, डिस्प्ले कैप्चर लगाने दो। मान दिस आओ amateur देखते हैं। streamers, आर्टिस्टिक सर्वे चलो। सो हेलो मैच। हेलो सो ब्रो। मैच। इंस्टा स्टोरी क्या? इंस्टा स्टोरी? these amateur streamers चलो man, come बस on. ये बता दो गाइस। चलो। चांस आ रही है If ना you laugh, you lose, guys. Let's go. Senses Match confirmed हो is गया so ना? weak. पहुंचने दो भाई। मैच स्टार्ट हो जाएगा। नहीं भाई होता है कुछ देखेंगे नहीं। कुछ इशू होगा। 5-10 मिनट देख पाएंगे। तो लगाओ लगाओ यार। मैं नहीं रेडी? हटता भाई। सब रेडी। यू लेट्स लाफ गो यू चलो। लूज, यस। हेलो भाई दा ओजी, हेलो ब्रो व्हाट्सअप। ठीक है चलो। फेस कैम कर दिया गाइस मैंने। गाइस हंसना नहीं है बिल्कुल। ऑब्वियसली वॉइस नहीं है उसमें। ए बॉयज है। Y'all, my tour guide. कौन है? बस क्या भाई? Yeah. Uh-oh, he done ate your damn shirt. Oh, hell. He eating it too.
बिग फैन बढ़िया कितना भाई दान में थैंक्स हर्ष क्या हाल भाई दैट लोग यू गुड बड़ा बहुत काम गुड अरे भाई इधर ध्यान दे दो। गाइस देखो हाँ, मैं वॉइस देख नहीं रहा आ हूँ। रही, आ रही है वॉइस, गाइस फोन नहीं अपन आता। कर रहे हैं इधर इधर चैट पढ़ रहा है। गाइस अपन अरे कर रहे इसकी हैं डिस्कॉर्ड की आवाज नहीं आ रही है क्या डिस्कॉर्ड की आवाज नहीं आ रही है? वीडियो की आ रही है ऑन करनी पड़ती है बॉटम राइट में। किधर बॉटम राइट में Full screen ऑन का करनी option पड़ती आ है ऑन वो। है अरे बढ़ा दे उसको। मैं फुल कर दूं हाँ फुल करते हैं। इतना सीरियस हो के ऐश क्यों देख रहा है हंसना नहीं है मतलब थोड़ी है हंसना नहीं मतलब हंसना नहीं एकदम है बिल्कुल ही पोकर फेस नेचुरल में है बैठा है। गाइस अपन ठीक कर है। रहे हैं नो लाफ चैलेंज वीडियो को देख के ठीक है हंसना नहीं है, Start इधर करो, देख start रहे हैं करो, start सबको। करो, start करो। जो हंसेगा बस ठीक है। मैं देख रहा, ठीक है। रुचिर देख रहा है जो हंसा हुआ आ रहा। ठीक है ठीक है जो हंसा वो 100 रुपए Done, 100 done। अरे रुपए भाई। डिपॉजिट करेगा। अरे ठीक है चलो स्टार्ट करो ना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो विज विज हंसा, विज के 100। मैं ऐसा हूँ ओए ऐसा न्यूज़ माइंड तो कर सकते हैं क्या बात कर रहा है Man, I am hungry. हाँ भाई I read this a 9 out of चला 10, जाएगा man. It reminds me of my childhood. It's not coming off, bro. It's just squeaking like that, bro. Yeah, it's not coming off. Oh no! Don't woof. I ain't been on Snap in a minute, Mo. No cap. Dedication and different character things. Listen, thing that I got. Smells nice. Finger in, lick it. Tastes nice. Lift the jug and drink a bit. Oh, this is good. This is भाई ये तो really good. 1000 रुपए हार जाऊंगा Calm down. Look, I'm not a cop. I'm not a cop. Jared logging. And do you go by Jerry? At times, yes. And do you have a brother Barry Yes. and a brother Terry? Yes. Is there another brother? Yes. What's his name? Gary. Is it raining? चेरी रह गई बस सिस्टर उधर चेरी हो जाता Yes. Hey, how y'all? Get your fucking dog, bitch! It don't bite. Yes, it do! What is this design? Go ahead. वाह ये तो क्यूट है अरे बहन से भिड़ गई Oh, Stephen Curry with the steal. Oh, juking and jiving. Oh, with the cheddar cheese balls. Oh my goodness. This day just can't get any worse. McDonald's give me a canned Coke? What situation are you guys in? यार इसको ऐसे नहीं बोलते हैं Okay. I just want my food. ओ Bro, why am I like... मस्त देख लो मैच स्टार्ट हुआ है कि नहीं वही देख लेंगे ये इसमें तो पकड़ रहा है मुझे तो मैच देखो ना स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये बहुत होता है भाई बिग फैन विज गॉड भाई थैंक यू भाई ब्रेड में डाल दे उसने। ये देखा है। Fast movement, yes. थैंक यू सो मच मैच इस भाई वैसे क्या हम आपके फ्रेंड लिस्ट में आ सकते हैं क्या क्रॉस तो रिक्वेस्ट वगैरह कर दो मैं देखता हूँ कर दूंगा एक्सेप्ट विज गॉड क्लोज रेंज डील्स वीडियो बनाएंगे पक्का बनाएंगे बस मुझे एक बार ये बता दो मेरी आवाज आ रही है ना मेरी खुद की आवाज आ रही है ना आप लोगों को आ रही है बीस आ गया। हाँ Excuse चेक me, करो sir. मैच चालू है Excuse me. Do you have time to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Hey, don't run from the Lord. मैच चालू हो गया भाई आ जाओ For JoJo, see what you better be good. इधर पॉज कर दो ठीक है चालू हो गया। रुचिर अपन बैठेंगे डन।
ये होगा। अबे ये लिविक, अरे लिविक लग क्या क्या? लिविक लगा है? रिहोस्ट। अरे लिविक ही है। दोस्त कराकिन भी है अभी तो। ओह नो। ओह माय गॉड। साढ़े ओके पैकेजेस भाई एकदम लाइव मुझे कर दो, हंसी एकदम नहीं लाइव। करा यार, हमें को भी किराया आ गया जो पैसे गए ना। Crossroad compound. Question is the other guy's gonna come हेलो भाई in वार्डन, हेलो ब्रो, the हेलो। situation. टीम इंडिया को सपोर्ट करो, क्या कर रहे हो गाइस? डिनर मांगता है। लेट्स गो टीम इंडिया। टीम दस इंडिया। पॉइंट गया। भाई पीएमडब्ल्यूआई का प्राइस मनी इंडियन रुपीस में कितना होता है? वो तो बस भाई आप ऐश बता सकता है। ऐश से बढ़िया नहीं बता पाएगा कोई। नंबर की बात ऐश से करो, ऐश वरना से मत करूंगा। करो। अरे बता कितना पूछ रहा है? कितना पूछ रहा है नंबर भाई? दो मैं बताता। बस प्लेगोड भाई नौ कोई रुक जा। कंटिन्यू करते इसके बाद नहीं, इसके बाद करते हैं ब्रो। मैच देखते हैं पहले। PGMI क्या regarding any update bro, just wait. अबे सेल्स की बात हो रही है, शिश। सुनो मैं क्या बोलता हूँ पता है, चैट भाई कर push रहे हो कर ना, दिया। तो माइक बंद कर लो डिस्कॉर्ड का। भाई पुश कर रहे हो? आप पुश कर दिया भाई। तीन नॉक एलिन कह रहा है अलादीन को। अरे भाई एक नॉक। नॉक फिनिश डाला? नहीं कैसे नहीं डाला? नहीं सिर्फ नॉक, लास्ट में नॉक दिया। भाई क्या खतरनाक पुश किया है भाई। कोई नहीं हार्ड लक गाइस, हार्ड लक टीम इंडिया, हार्ड लक। नेक्स्ट मैच इज द इंशाल्लाह वॉइस प्लेड वेल। नाइस ट्राई, हार्ड लक। 4 मैच और है ना आज। $60,000 इसने खाए। लेट्स ट्राई करते हैं। $15,000 भाई 100 200 में बता, तू तो डायरेक्ट भाई तो प्राइस हजारों पुल में जितना चला है गया। उतना ही बोलेंगे ना नूब। जाए तो क्या पूरा प्राइस पूल बता दूं तेरे को? रुक रुक रुक, अरे वो बंदा पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा। टी और ओनीवन है बे, रुक जा। रेवेनक्लॉ और छारी सर का 3 करोड़। रोड। हाँ और मैं दही पापड़ी चाट खा रहा हूँ गाइस, नजर मत लगाना प्लीज। माय फेवरेट फ्लेवर ऑफ टोयम। नॉट बैड। अच्छा है यार, ये क्या है? दही पापड़ी चाट बेस्ट है, वो खा के देखो। टूयम एनी टाइम एनीवेयर वेगन स्टिक। टीम में लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत जगह टीम में आ जाओ। बस वेद भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी। टूयम के कितने फ्लेवर है? आई थिंक 8 गेम लाना पड़ेगा। शायद 8 फ्लेवर्स है। अपने नेट से मार दिया एक को, ऐसा हुआ क्या? अपने नेट से फूटा क्या कोई? चेक करता हूँ। पे तो लैग हुई थी पता है स्ट्रीम वो टाइम पे। चैट भी पढ़ लिया करो। सॉरी। हो गया भाई। हेलो चैट। बड़े लोग भाई। भाई चैट इतनी तेज दौड़ती है, थोड़ी मिस बिलीव कहाँ है ब्रो? बिलीव साउथ इंडिया घूमने गया है। कॉम्पिटिटिव और हम वेल्ले बैठे हैं तो बहुत एटीट्यूड आ गया विद भाई में। देख रहा हूँ PUBG PC प्लेयर ब्रो। एटीट्यूड आ गया है क्या? अच्छा लान प्लेयर ब्रो। मतलब सुकून से गाइस तुम भी ट्राई करो भाई। 7C और ये होल्ड कर रहे थे तो साइलस ने नॉक निकाला, पुश कर दिया भाई रोल सीधा। वाह, अब देखते हैं गाइस, प्रॉपर फाइट देखते हैं भाई। सारंग ने बोल गया है और ये तो चुप है। अच्छा सारंग ने खुद को ही बोल लिया। कमेंट्री जो कर रहा है। अरे मजा आती है भाई। ये जेनफोर्स है ना, जेनफोर्स ये पीसी प्लेयर है गीक फैम का। प्राउड मोमेंट। बीटीआर जेनफोर्स। वेद भाई प्राउड मोमेंट। वेरी प्राउड मोमेंट। ये मेन उसमें आ गया। हाँ आई गेस। अरे नॉक फिनिश है साइलस। लक्सी बेंच्ड है तो ये आईजल कर रहा है। टिफन भाई थैंक यू ब्रो। आप नंबर 2 मैं डीएम करता हूं भाई, मस्ती कर रहा हूं ही इज सीरियसली। एक्सप्लोरिंग द साउथ ऑफ इंडिया। यस साउथ ऑफ इंडिया। भाई शाउट आउट दे दो। एफटी पैंग भाई इंस्टा का पासवर्ड याद है? हेलो इनसे भाई क्या थंबनेल बनाया भाई, वो मजा आ गया। धनंजय शर्मा हेलो ब्रो, क्या हाल चाल? बढ़िया ब्रो, तुम बताओ कैसे हो? गाइस 8 वाचिंग यस ब्रो। मैं बोल रहा हूं चैट रीड करते हैं तो माइक बंद करके करते हैं। अबे तो तू अपना कर रहा बंद हो गया। मैं कर रहा। जब चैट रीड करो जब बोल ली बस। हाँ पुश टू टॉक कर लो ना।
They saw the first why. भाई शॉट आउट दे दो FT बैंक शॉट आउट टू यू ब्रो भाई सीरियस भाई सीरियस बोल रहा 9 हूँ मैं वॉचिंग है जी। हाँ नहीं भाई अरे ब्रो अभी तो मेरे गेम को ही नहीं है पता है, दिख आपका रहा है। बुक करके क्या करेंगे भाई आपका ट्राउट लेके क्या करेंगे ये मान दो इस 7 का वैसे फिनिश भी हो अभी गया। ट्राउट की कुछ जरूरत चिकन नहीं चिकन गेस करो किसका होगा। फैल्कन। रुको यार जोन बना नहीं है। फैल्कन का चिकन डिनर लिख के ले लो आप लिख के लिख के लो अभी जस्ट वीपी कर दो अब। चेंज कर रहा हूँ मैं चेंज कर रहा हूँ वैम्पायर्स का है That's exactly right. मैं NGX बोल रहा हूँ NGX। Your favorite landing crabgrass might have been spot on. Vampire esports. Now it appears that they're just taking full control of crabgrass. That's एक सेकंड कहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रही है we're talking about it yesterday during the ऊपर ऊपर देखो हाँ नॉर्थ। दिखी 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 और नॉर्थ खाली है यार सही बोल रहा हूँ छोटा सा मैप है, उसमें भी इसको टीमें नहीं दिख रही हैं। angles on them, and you were pointing towards the north too. I mean, Yeah, there I is still saw. one player from Dead Eyes. Yeah, exactly. There's Dead Eyes guys up there, and also Nick Galaxy up by Blobster. Actually, S2G टर्की की टीम। flowers in Danish. नहीं Crazy mental thing. A कहाँ lot of की stuff है? is happening, एने especially in this map. I really feel like मॉड दे दो वेरी से AK इज आल्सो स्ट्रीमिंग गाइस उसका आपको एने वो उन पे दिखेगा टर्की का scan। लोगो क्यों है फिर? नीचे बॉटम लेफ्ट में देखो AK ही है Banta मॉड वो भाई नहीं पता। मॉड दूंगा जब अभी मैं सीरियस मतलब यार regular इंस्टा मार्ट कराना पड़ेगा और कोई है? दही पापड़ी है तो स्ट्रीम कर करने दो। वाला हूँ मैं इस पे यार बस समीर आम वाईटी पे गुड ब्रो जस्ट तो स्ट्रीमिंग आप यू रेगुलरली से। आओगे तो मॉड बना हाउ आर दूंगा यू? आपको मैं अरे यार रुको पुश टू टॉक बिग करके आने फैन दो मेरे दिस को। गॉड भाई लव फ्रॉम कोलकाता थैंक यू ब्रो लव फ्रॉम मुंबई बिग फैन दिस गॉड लव फ्रॉम मुंबई ब्रो गेम आने पे लोग का टीम में अभी टीम में जरूरत नहीं है ना ब्रो अगर हेलो रहेगी तो पक्का बताऊंगा यार भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तुम एक ऑफिशियल लैंड भी खेल चुके हो बट फिर भी इतने कम सब्स और इतनी कम वॉचिंग क्या कर सकते हैं ब्रो कोई बात नहीं इट्स ओके चलता है कोई बात नहीं जितने हैं आप लोग देख रहे हो ना वही बहुत बढ़िया आता है 15 की वॉचिंग आ रही है ना उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पर आप लोग देख रहे हो वही बहुत है मेरे लव यू गाइस और हैशटैग बनाएंगे और कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाएंगे लैंड में धीरे धीरे सब हो जाएगा Player that was knocked Alpha 7 trying to throw some nades, trying to see if they can maybe connect with anything over there, trying to get another knock. Ooh, get तो किसी के माइक में से वो एको हो रहा है get a lot of damage from a grenade thrown by Carrillo. सबको हो रहा है? हो रहा है तो स्ट्रीम की आवाज अबे सबका तो म्यूटेड है। मेरा तो पुश टू टॉक पे है। ठीक है ठीक है टॉक पे ब्रो प्लीज गॉड भाई मोड दे दूंगा भाई रेगुलर स्ट्रीम करता हूं आप रेगुलरली आओगे रैड PMPL अरेबिया फॉल्स का विनर है। क्या पुश टू टॉक कर ले विद गॉड। हां क्या बोल रहे हो आप विद मैंने कुछ नहीं। और पक्का दूंगा भाई एक बार रेगुलर आओ रेगुलरली स्ट्रीम करो बड़ा पंखा भाई थैंक यू भाई ब्रो AGMS में तक 3 BMSD में स्टेक 2 तो होता है कोई दिक्कत नहीं है गाइस आप लोग गाइस अभी भी तुम चेंज करना चाहते हो या यू आर स्टिकिंग विद फैल्कन? आप इतना कुछ इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं वही बहुत है 18 के हो गए ना हाँ ब्रो हो गया 18 का हेलो 19 का हो जाऊंगा मैं ये साल में हाँ बोलो। अभी भी यू आर गोइंग टू स्टिक विद फैल्कन या यू आर गोइंग टू चेंज? यार मैंने जोन नहीं देखा, मैं जोन देख के बताता हूँ एक सेकंड। अच्छा इससे बाद वाला जोन क्या ही बनेगा? आप लोग देख रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। फोर्थ जोन इसका सब हो जाएगा। मैं 6 जोन का बताऊंगा। अब नहीं कह सकते यार मैं बताता हूँ एक बार मैप दिख जाए तो पक्का बता दूँ। NGX कौन कह रहा था तो पिट रही है। कहाँ पिट रही है? एक नॉक है उनका। अरे नहीं भाई एक नॉक है यार ये देखो पीट भी तो रही है। फिनिश है वो भाई फ्रीक सोच के देख बाहर फ्रीक जाके देख बोल फ्रीक देख देख लिया भाई उसने मार भी दिया। देख लिया भाई अमूली फिनिश ब्रो ऐवी थोड़ी फ्रीक है वो। सॉल्टी है क्या? नहीं गाइस 2M फ्लेवर्स में सही पापड़ी है बट प्योर फ्लेवर होता भाई पहले आप डेली तो करो करेंगे पक्का करेंगे ब्रो आज से चालू है। डेली तो स्ट्रीम नहीं लेकिन हाँ हम रेगुलरली करेंगे। डेली तो नहीं कह रहा मैं लेकिन रेगुलरली ओ ओ ओ ओ ओ बंदे ने 4 रेड
वो किए चोक। तो भाई अब मौली अच्छा डिसीजन था ऊपर फेंकने नाइस नेट। एक मेरी प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी इस भाई अगर गेम ड्रैगन में। बीटीआर का ओए लग रहा है मेरे नाइस को तो। यार, मिथिक ने क्या मारा है भाई। नहीं, I'll stick with NGX. Believe in NGX. I'll be with BTR so NGX 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 फैल्कन पे भी अच्छा जोन है भाई, बोल ही फैल्कन रहा भी हूँ, है। बोल ही रहा हूँ वेस्ट भाई को सबसे फर्स्ट वही बोली है मैंने। भाई सही चैट रेट करेंगे पहले। दानवान बची भी टू मैन ही है। नहीं अरे बच भाई जाएगी फोर मैन। गन से ही मार देता मैं नेट कर। तो कितना स्प्लिट रहते हैं तुम देख रहे हो वेस्ट भाई, लोग कितना स्प्लिट रहते हैं। कुछ उनके बाहर मार रहा होता है, जोन में मार रहा होता है। फैल्कन ही जीतेगी ब्रो। फैल्कन बोल ही दिया है वेस्ट भाई की कुछ नहीं गलत है। नहीं ब्रो, फैल्कन का गेम नहीं है यार, एनजीएक्स का अबे अगर फ्रीक लिखा ना है हो तो गो क्या फ्रीक। आप लोग के पीछे चल रही है क्या, लाइव करो ना। खुश हो रहे हो वो लाइव लोग। कर लो कुछ सब। गाड़ी है उनपे, कुछ गाड़ी गाड़ी। वो है भी तो ओपन जीप मेरे को अभी दिखा है वो। अब ये सब नहीं होता वेस्ट भाई। मेरे को तो पता था ब्रो। मुझे भी पता पता था था ब्रो। फिर ठीक है। एनजीएक्स का गेम है एनजीएक्स। नहीं ब्रो। मेरे को अभी भी एनजीएक्स लग रहा है, एनजीएक्स ही है भाई। ऐसे ले कैसे? फैल्कन के और क्या जोक किया इसने, डीडब्ल्यूजी बेट भाई जुंगी दामन कौन है। जूनी यूनी जूनी यूनी है वो, जूनी नहीं यूनी। जूनी जूनी यूनी जूनी JUNI भाई ओके व्हाटएवर। उसको यूनी एनजीएक्स भाई एनजीएक्स। भाई कुछ नहीं बे, फैल्कन ही है भाई। मैंने एडवांटेज भी है, लाइव कर ले तो आप पीछे हो थोड़ा 5-10 सेकंड। एडवांटेज तो है। हाई ग्राउंड एडवांटेज पे है। वही वही। नाइस। अबे नेड आ रहा है, और नाइस यार। अब नॉक होगा फैल्कन का एक। भाई मैं क्लिक बटन दबा स्पेक्टेटिंग चेंज करने के नाइस लिए वन यार, पावरफुल क्या भाई। एनजीएक्स इतनी यहाँ ज्यादा हाँ, सही बोल वैलोरेंट रहे थे, खेलने सही के बोल बाद रहे ये थे। हालत होती है गाइस। भाई फैल्कन से स्टिक अभी भी क्या मारा है पावरफुल ने भाई। 2 मैन रह गए बे बस। 6 उनको रिवाइवल भी मिल जाएगा दामर को। ओ नाइस। बीटीआर का जिगा ना, मैंने बोल दिया। कोई नहीं कोई नहीं। पावरफुल को अगर पकड़ा नहीं ना तो पीटी हो जाएगी। अरे बीटीआर ने पुश कर दिया ना लेकिन ये लोग। हील कर लेना एनजीएक्स नहीं प्रो। अरे हो अरे गया। अरे 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 ओ हो गया काम। एनजीएक्स तो ओए थर्ड आई बोला है, था ना। थर्ड आई है एनजीएक्स तो। सेकंड में यार जोन में ही बोल दिया था फैल्कन का है ब्रो। भाई ये फैल्कन का जो नेवर अलोन है ना भाई, क्या खेलता है प्रिडिक्शन। भाई पोजिशनल वाइज चांस ही नहीं था एनजीएक्स हारे। हाँ वही 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 एनजीएक्स ने वहाँ पे मतलब चोक किया है भाई। यूनियन भागा है यस। चोक किया। मैं बोल रहा एनजीएक्स की जगह पे ओजी होती तो चोक नहीं होता। ओ माय हाँ गॉड। बट वही है कि हम नहीं है वहाँ पे तो भी क्या भाई भाई भाई। से और ये जो फैल्कन का वो है ना नेवर अलोन, भाई क्या मस्त खेलता है। फनी वीडियोस पे आना है क्या पावरफुल का वो वापस। जो नॉक था ना फ्रीक पे बहुत बहुत क्रूशल बढ़िया था था वो। वो बैरल वाला ना। बहुत। हाँ बेरिल वाला। भैया हैंड कैम वीडियो पक्का है, प्रॉपर वीडियो देखा गया बनाऊंगा गाइस, गाइस, जो 10 मतलब मिनट का। और के साथ बनाऊंगा मैं कैमरा वैमरा से। लव फ्रॉम त्रिपुरा है, फॉलो हो जी क्या करना है FF भाई। and BGM both the line Man will continue with our review. Come. But you guys are too underrated. Yes, we are underrated, but yes, we are coming up. हाँ क्या हाल है, बढ़िया सब बढ़िया भाई। उधर से ही कंटिन्यू करें ना या दूसरा को लगाना है? थैंक यू ब्रो क्रिश एफ। वहीं से कर दो। अच्छा वो इतना फनी है नहीं। ये वाला। वो फनी नहीं है यार, वो फनी नहीं है। अरे वो इंग्लिश पंचेस है वो, अगर तुम प्रॉपर सुनोगे तो समझ जाएगा। तो अरे नहीं, हाँ वो आवाज ही तो समझ नहीं आ आ रही रहा है। है, समझ आ रहा है लेकिन इतना फनी नहीं है।
क्या करना है? यू लव लूज हिंदी एडिशन देखे क्या? देख लो। यू लव लूज हिंदी। हेलो स्ट्रीम क्लोज भाई, आपका नेट गया क्या? हाँ, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही थी तुमको? हाँ हाँ अब चेक आ रही है? दिख रही है। अच्छा, मेरे को पहले क्राइटेरिया क्लियर करो कि स्माइल कर सकते हैं और ही नहीं करना। स्माइल कर सकते हैं, बस प्रॉपर हंसना नहीं है। हाँ 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 हाँ, वाला। मतलब स्माइल, दांत मुंह नहीं खोलना। हाँ, मुंह नहीं बोलना है बस। भाई PMWI की चैट में कोई लिख रहा है वी नीड जॉनी ओमेगा विजगॉड प्लस आतंकी। ठीक है भाई, अभी बना दे। अभी बना दो। अभी हाँ तो just- मैं बोला तो तेरे को बताया तो। चलो, आर वी नहीं रेडी? सुना, तेरा माइक बंद होगा। अच्छा हाँ, मेरा पुश डाल तो कोई नहीं, चलो। आर वी रेडी गाइस? वेट अ सेकंड यस सर। आई एम नॉट रेडी, नीड टू चेंज। ये मेरे को थोड़ा खतरनाक लग रहा है इसके टाइटल के हिसाब से, बाकी ठीक है। खतरनाक बाकी देखना है, बाकी कुछ चीज मजा नहीं दिख ना चाहिए। जाए सिर्फ बाकी। टाइटल के हिसाब से। चलो लेट्स गो। चलो रेडी गो। धीरू मॉन्चिक, और आज हम करने वाले हैं भाई वो चैलेंज जो कि काफी ज्यादा फेमस है एंड मैंने आज तक नहीं किया। काफी लोग ने कहा कि भाई करो, तो आज हम करने वाले हैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। आज यूट्यूब पे लाइव आओगे शाम को? बताइए गाइस मैं यूट्यूब पे भी लाइव वाला है आऊंगा, कि मैं यूट्यूब पे भी दोनों का। हंस देता हूँ। तो गाइस मैंने सीधे यूट्यूब पे सर्च कर दिया। अरे ये इसका रिएक्शन है ये। आप बहुत बढ़िया कोच। कैसे मिले? मैं नहीं। ओजी से मेरे को कोच से मैसेज आया था। रुक, When I इनके was free, वो उसमें होगा ना ये। तो मैंने ट्राई आउट दिया, फिर हो गया। कैन आई जॉइन और लाइक कंटेंट क्रिएटर? अच्छा कंटेंट बनाते हो तो फिर मेल नहीं वगैरह यार। करो मेरी, और को तो अगर और को पसंद आया तो बिल्कुल लेंगे वो। कहाँ से लाया? करता नहीं हूँ ये सब। अब ये सब छोड़ो गाइस, दिस इज माय फेवरेट फ्लेवर। ये खाओ भाई, बहुत बढ़िया है। दही पापड़ी चाट भाई फेवरेट, अभी खाऊंगा मैं। लेट्स डू नॉट लाफ चैलेंज। रुको, हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगा भाई। मिल गया। फटफट लगाओ, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा वरना मैच। चलो। कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका टेलीकास्ट कर रहे हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री को ये बात पता चली, प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को बीच में ही टोका। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। ए वल्लू बता इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन। स्टैंड अप फॉर जनगणमन, व्हाई कांट यू स्टैंड अप फॉर जनगणमन? भाई व्हाई कांट यू स्टैंड अप फॉर जनगणमन? जनगणमन भाई, जनगणमन क्या होता है? कोच Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। भाई जो रेगुलर व्यू होंगे रेगुलर स्ट्रीम पे, अभी नहीं, रेगुलर स्ट्रीम्स पे मेरे उसको देंगे मोड। मैंने कल ही ट्राई किया था दही पापड़ी चाट। यस खाओ, बहुत अच्छा यार दही पापड़ी चाट। सीरियसली ओमेगा वाला बंदा है ये, शायद सुना है मैंने। तो कोई भी मतलब वेफर टाइप में कुछ खाना है ना, दही पापड़ी चाट इज द बेस्ट फ्लेवर टोयम का। तो टोयम वैसे हार्मफुल भी नहीं है भाई क्या कर रहे हैं? डॉज टू मून। हाँ ये मैं। अरे बट वो नीचे कैसे आएगा? जाने मेरी जाने मन। अरे भाई। No, I do cooking, huh? Oh, seriously? Yeah, I do. I do quite a lot. इसको क्या हो रहा है? Those aren't mountains. Waves. Astronaut in the ocean. अच्छा था। पानी तेरी फुद्दी विचों आवे ते लन्न मेरा गावे, मैं अज तेरी फुद्दी लेनी आ कुत्तीए, मैं अज तेरी फुद्दी लेनी आ मंजी उत्ते बैठी आ तू बस मेरे पास पीछे करो वापस सुनेंगे। फिर मैं पीछे करो के लिए जी रहा हूं भाई। मैं मेरे जेल भी गया था वो। अब तुमसे क्या छुपाना वा, मैं जी रहा हूं। रियल लाइव है, समझाए?
अरे पीछे करो ना, हेलो, पीछे करो पीछे। ये वाला आपको दोबारा आवाज नहीं आ रही दिखाओ। हमारी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हमें आ रही है पर आपको हमारी नहीं आ रही है। पीछे करो, वो गाना लगाओ फुद्दी वाला वापस। भाई वो बस था भाई, लगाओ ना। मेरी जान याद आया उस बस दिन करो, रेडी? वो सुनने दो, चलो। फैजान बिन आशर आलो ब्रो ऐसा करो पानी करो। तेरी फुद्दी विचों आवे ते लन्न मेरा गावे, मैं अज तेरी फुद्दी लैनी आ कुत्तीए, मैं अज तेरी फुद्दी लैनी आ, मंजे उत्ते बैनी आ तू फुद्दी कट के, बड़ा मजा आंदा तेरी फुद्दी चट के। ओह फक भाई। मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, अब तुमसे क्या छुपाना माँ, मैं जी रहा हूँ। मैं कीरा हूँ। हीरा हूँ। मेरे को देखा नहीं एनीमे, मेरे को समझ ही नहीं आएगा। एक है समझा? ये को समझना हाँ चाहिए। समझ गया समझ गया, Why do women only like जितना just देखा उतना bitchy समझ but गया। like shit? Why do guys only want bitchy bimbos who walk all over them? मैं नहीं हंसा हूँ। अब भाई हंसी नहीं आ रही, सॉल्टी वीडियो को रिएक्ट करते हो बेटर रहेगा। मेरे को तो क्या? एक मैच चाहिए बस। सॉल्टी के वीडियो को रिएक्ट करते हैं। अबे वीडियो ये हंसी नहीं आ रही देखो, है, पहले वो देखो कि वो स्टार्ट हुआ कि नहीं मैच। हंसी नहीं आ रही होगी। मैच स्टार्ट होने वाला, आ जाओ मैच स्टार्ट होने हंसी वाला। नहीं आ रही? नहीं कीरा ओपी ब्रो। अरे चलो वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। पीएल भी तो देख सकते हैं अपन। पीएल वॉच पार्टी। वो मैच को स्टार्ट होगा, वो तो कमेंट्री करेंगे। हो जाएगा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आ गया। निगे मैंने इसलिए ट्रायल कर लिया था ब्रो कल ही। हो गया? यस हो गया। लेट्स गो 7C इंडिया इंडिया। That would be really hard for the teams to try to traverse that. My favorite drop here is Dino Pack. The amount of loot Dino Pack is just through बाकी सब खोल रहा। डिस्कॉर्ड पे जो दिख रहा था उसको म्यूट कर दो। क्या? डिस्कॉर्ड पे जो कोच वीडियो दिखा रहा था ना उसको, उससे एग्जिट मैंने इको ना हाँ हो। कर दे बन दिया। मैंने कल ही ट्राई किया दही पापड़ी चाट, हाँ रीड कर लिया था। बेबी विजी इज लव, माय गॉड थैंक। हेलो ब्रदर पनिशर, हेलो। Hey bro, any tips on how to qualify in BGS Indian qualifiers round? Bro game आने दो, सब tips इस बहुत हंसमुख है। yes hey bro, any tips how to bro वो नहीं स्पैम मत करो, अभी तो गेम आने दो फिर सब tips देंगे, सब tips। And oh, knockouts too, also 777. Yeah, you know. 12 मैच में मैप एकदम खाली खाली लग रहा है। वही 12 टीम है सिर्फ। हाँ 12 टीम है। वही पूरा मैप खाली लग रहा है भाई। हर मैच मेरा मार देखना एक बार आप बस। तभी तो स्टार्टिंग है 3 जोन तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो भाई अपने इंडिया का बंदा दिख गया मैडमैन। स्टिल कोई स्प्लिट नहीं है, It's obviously super hard to get. Oh, कोई भी स्प्लिट नहीं है भाई, कोई भी। एसटी भी स्प्लिट नहीं है, 7Cs भी स्प्लिट नहीं है, फैल्कन भी नहीं है, जोन तो देखो कोई स्प्लिट नहीं है भाई। भाई ऐसा अगर जो हम इंडिया के अंदर मतलब टीम ऐसे खेल रही है ना, बता रहा हूँ ना, एक जा रहा मॉन्टे, एक जा रहा कहीं और, एक जा रहा कहीं और। ये बात तो है। जस्ट 3 बंदे उतरे कंपाउंड। Me too bro. Nick my Galaxy on screen. They're going to be sharing this combo. Not going to be a lot of loot for them. Time is downwards. They are going to be outside of Dino Park, just on the east side. Next time is the we gonna go international is the win is the Inshallah. OG is the India OP is the. Packages are on sale for a limited time, and you can also win PMWI treasure. ये इंडिया जीती है अभी तक, कितने पैसे जीती है? $700. Watch PMWI together in game esports center with your friends to win some PMWI special sets. Never alone on screen here for Team. Fantastic win just last one. As you see on your right side, rewards ranking is updated. $60,000 for Alpha 7, 48 for S2G, and 42 for Falcons. Now that they're able to put a chicken dinner on the board there, that's amazing to see. But 101 points, 30 points. Falcon actually closed the gap a little bit from the 37 we saw before. So 30 points now down to second place. But अच्छा हाँ, इसका पॉइंट टेबल भी वो है ना 10 6 5 4 3 2 1 1। आपको वाह 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 यप वाह 10 6 5 4 भी है। नहीं बताओ पता अभी पता लगा है। मुझे पता है बताओ 10 6 5
हाँ 4 फिर अच्छा 1 1 1 1 1 नहीं फिर 2 फिर 1 1 1 1 1 I'm hoping कितने 1 1 1 1 1 9 तक 1 1 1 8 बराबर तक बराबर 8 तक 1 1 1 9 10 हाँ 11 12 के 0 the 0 Team point Falcons has been performing really well, and hopefully they will continue to perform like that. That way, Maxman doesn't end up losing his eyebrows. He really Hello, loves bro. him. So I'm hoping, even though I secretly want it to happen, I'm hoping it doesn't happen. You know the worst thing you can do is shave one eyebrow because it takes so long. 8 तक के 1 है 9 का 0 है हाँ वही तो हाँ। बोल रहा Does हूँ not look good, and it takes so long for it to grow out. Like one of the slowest growing hair or places of hair that you can grow out, except for your Eyelashes? eyelashes. Exactly, those are also pretty slow. Except कास्टर्स क्या बात कर रहे हैं कुछ भी आईब्रो भाई, कुछ शेव भी, कुछ भी आईलैशेस भाई। शेव बाउंसर जा रहा है मेरा you could shave him off. देखो लेकिन भाई बहुत पकाते हैं यार इंग्लिश में Stop it! You're making me blush. Ah. Making me blush, wow. Rotation here with the snowmobile. Boy, It's like your favorite team, awesome. Abhi. You've seen some Yes. kid, and I forgot about this Nigma snowmobile. Galaxy Definitely interesting. When I used to drive them, they were not the GX. best GX. rolling them. And Yeah, they're better off road than on the road. Yep. Yeah, definitely. 100%. That's You can the see big them one, right? switching off there with one of the snow bikes. I don't even remember what this one is called, to be completely honest. But I know that one is, to control it, is even worse than the snowmobile. You can see Bigatron right here just taking full control of the compound. And it's interesting, as I'm looking at the map here, Vampire Esports is going to be able, if they do end up rotating towards the east, instead of making a long rotation, they are going to be able to rotate just absolutely freely to Cosmodrome and Trefno if they decide to. Yeah, exactly. They're going to be completely fine with that. The question is, how are we going to see those other rotations? Because right now we see a lot of teams coming in from that south side. There's guys. Shifu on screen is going to pick up on top. He has a G36C in hand, I see. Maybe he prefers playing that. I actually kind of like it as well. Fortunately, I don't think it's as good as the M4. It's just somewhere in between. भाई वीकेंड ही अल्फा 7 का बहुत स्ट्रांग है Between the M4 and the Scar, but yeah. बस खेलते हैं अल्फा 7 वीकेंड Not my personal preference, but I think it's a cool weapon in general, and I think it's a nice one for this one here. Loxy with the 4x on it, he's going to be able to absolutely shred people if he's able to close them out. Not that much utility as he's 6 smokes and 1 grenade. Coming out and rotating. They are coming in from the south side again, a really populated area. Going to be trying to make their way up to the north by Cement Factory. And I was going to point out, 7Cs is still so far out. They were in Double Maestro. And with that You know team, why? You know why, right? Why? Because we're in Vikendi, so it's a cold अरे map. बाप They रे move slowly because they're frozen. 7Cs. कास्टर के जोक्स Well, it's भाई not just बहुत डेड Vikendi. होते हैं भाई This थोड़ा team आवाज has एकदम कम कर लो definitely been moving very slow. They are भाई gonna be गेम की sitting आवाज है at बस the bottom of the leaderboard. फाटो कास्टर ने बोला स्लो क्यों होता है क्योंकि फ्रीज होता है तो धीरे चलते हैं लोग Deadeyes नहीं तो भाई and Bigatron. ये बस की नहीं Making some of the players there from Bigatron back off. I did end up We seeing miss some Indian casting. players, and we know what Yep. SG has been able to do. If they do see an opening, they are going to make that push, especially if they get that knock. But with 7Cs, this is a team that has been playing very slow. They are currently sitting at the bottom of the leaderboard. Yes, they have been able to win some of the earnings, but I would like for them to become a little bit more aggressive and not playing so passive. They have this skill. We saw what Scout was able to do yesterday. Yes, it was during a show match. Yes, it was just against 2 people, but I do want to see a little bit more. R8 versus R8 हो गई आज Who's going to be getting the first knock? We haven't had a nail him yet, and somebody's going to नॉक फिनिश डाल दिया भाई क्या बात है आप कितनी लाइट चल रही है क्या हुआ कुछ नहीं That was impressive. Rod being भाई able इसने to क्या कर take दिया down R8. सबको मार दिया शायद इसने 3 बंदों को मार दिया Impressive of the guys coming out of Egypt here. Kaito on screen. Well played by them. Now we have Deadeyes guys. More G36Cs in action. Smoke come out. I think he's going to be completely done here. Yeah, he's going to bleed out. That's unfortunate for Deadeyes guys. Losing a player like that. That is Luxy confirming that one. ऐसी भी लाइक भाई का किल नहीं छोड़ूंगा Closing. Luckily, it's kind of center. It's going to be kind of easy here for Peshkova. Could see a potential urban opening with that. Peshkova is actually kind of nice with that road that's going through the center and all the open buildings. A lot of fights with that. And as you're pointing out here, a lot of teams are still not inside the circle, 7.
Yeah, Enigma Galaxy very separate from each other. I think they're looting. I'm not sure exactly what's going on with that team. Maybe they're trying to get some of the heals. Hopefully, they're not trying to go for a heal up. Team Falcons making now their push towards the east, and then you see Damwon Kia just sneakily making their push towards up north. Right. They need to be careful because they might end up running into Alpha 7 because Alpha 7 guys weekend की काउंट निकालेगा. So I think two teams that had the ये assassin 8 करके जो टीम थी वो तो मर गई. what's R8 sorry. if Damwon Kia R8 does तो not end up just changing their rotation. Overall, though, most of the teams now in this zone, Bigatron. मैप देख के पता चलेगा. Glad that they didn't end up losing Obviously. earlier today. मैं कहता हूँ Alpha 7 चलो बिना मैप देखे. Scouting to see if they want to take that. Yes, भाई. Deadice did आप back बताओ. just in time to stop everybody else. And Bigatron is मुझे लग रहा है ये मैच Alpha 7. with both of their twins, Luxy and Suxy. Alpha So it 7. could be just that Luxy Yes. doesn't like. आप बताओ. I'll have to ask him and I'll find out for everybody tomorrow. Yeah, exactly. That'll be great to hear. And obviously, there's also that touch, right? We're playing these 6 different maps. Oh. Some players might मैप ही देख के like it's one of their favorite maps, right? And the other players Support ये game ST को support चलो. ST insight and a lot of नहीं. knowledge because the terrain on each map is so vast. नहीं रुको यार मैप देख के बताएंगे. सपोर्ट तो मैं इंडिया को कर रहा हूँ. लेकिन हाँ मतलब पोजिशनल वाइज आवाज कहाँ गई तुम्हारी? First airdrop collected here for Call C for S2G. अरे भाई आवाज आ रही है मेरी गाइस? S2G being आ रही है. क्या लाइव स्ट्रीम लैग हो रही है क्या उनकी या नेट लैग हो रहा है? 3 finger setup it looks like. अलादीन को मार दिया उन लोगों ने. Oh yeah, Good guys. Oh my god. It looks absolutely. भाई S2G क्यों मिलती है हमेशा ये लोगों से? Yep, then they're rocking it and they're playing it as well. Like when they're super slow or move quick, then sit still. Shots coming in here from Race. A lot of G36 in play. I like that. None of this team is having to rotate yet. The circle hasn't fully closed. Alpha 7 did end up moving a little bit more north, kind of freeing the way up for Damwon Kia. Team Falcons now positioning themselves between Alpha 7 and Damwon Kia. And guess what? Damwon Kia now needs to be careful because they might end up getting sandwiched here between Enigma Galaxy and Alpha 7 as Alpha 7 is starting to go a little bit south, seeing if they want to take that compound. It comes down to what the circle is going to do. What are we going to end up getting? Are we going to get a somewhat of an urban? Oh, we that, are. Boy, that Peshko maintains shift a भाई. lot of water, which means that the teams that are on the east side, close to the water, can play that uphill. But Peshkova is going to be crucial for this. I could see a few teams, maybe even 3 or 4, trying to just rush that and prioritize having that because it is quite heavily center right now. More teams are trying to rush into some better angles. Right now, Enigma Galaxy outside the zone here, 7. It's not looking Hi, Miss good. Bhai. Hello, Joker Gaming Long way 720. ahead. Hello, They have a bro. few teams My that stream, potentially guys. gatekeeping. Stream second. Fabian, no, I'm not sure. Fabian is just running in the open here. Rove could potentially take some shots, but he's waiting. Bhai, free kill maro. Good turn. He is inside the zone right now. Shots up. They're 3-2-1ing that one, and Freak and Raouf is able to take down Fabian quickly and disperse of that. Meanwhile, the last 3 players from Damwon Kia, they're going to be rotating into the zone here on the southeast side and try to prioritize that. They're going to have to be careful. Alpha 7 Mafioso is going to be holding an angle there for his team, and he might be able to spot some of the players there from Damwon Kia. Damwon Kia already losing one of the players from Enigma Galaxy. Okay, Apex Mobile team है क्या? Apex Galaxy waiting for everybody to be on the same page. Apex Mobile team Now, तो Star नहीं. Wars Esports stop getting knocked by S2G. S2G, we talked about this. Guys, सारा knock shit. Finish. Can he take even more advantage Oh of this? shit, guys. 2 men down in Team India. By surprise. Scree getting knocked as well from S2G. This is going to be a full S2G Bhai, advantage. S2G full aggressive team. Have the numbers. We saw one of the players also trying to get it. One of the Bhai, D eliminate भी हो गई. Pika slowing down a little bit. Action. There PTR ने भी मार दिया और ST भी पिट रही है मुझे तो लग रहा है भाई. Pika almost getting knocked, and there's going to be another nade going his way. He needs to be careful. Oh, almost. 4 बंदा बचा है ST का. The only thing that's currently holding him off. Molotov being deployed for Call C. He has a 3 west, of course. Being able to get that airdrop really close. Oh, bhai, push भी कर दिया. That's a nice push here. That's a sweep around the edge for SSG. Last नहीं They है. could be pushing Action on भी that, है, trying to pick take up down भी है. Scry, confirm that one. Meanwhile, see just a few players left. That is it for that. Action ने knock किया एक. बढ़िया बढ़िया. In that situation, Starwood has to back off, and it's just action now. Put together with Pika inside the smoke. Action finds Race. That's important. भाई 2 knock कर दिए. Action with some more pressure onto the SG guys. Action बढ़िया player. It's unfortunate for Stalwart, down to just 2 players now, not being able to
Oh, that's a big situation for them to take that one out. That vehicle could be crucial for them. Colsey with the Nice nade, Mark Pika. 14, so strong, even up close range. Pika trying to nade that corner 7. Yeah, these two teams are fighting for so long that I'm wondering if 7Cs is very close by. Are they gonna decide? 7Cs third party कर सकती है लोग को. Third party this. It was the aggression that I want to see out of 7Cs, but I don't think they're gonna be doing it. You can see Hamsi picking up his teammate right there. Action and Pika though ultimately being able to hold it off for a very long time for their team, and they're still trying to find some of the other people. I think Action ने भाई जो पीछे गया ना. from SGG, hoping that they can get some kind of elimination. We do end up getting a new circle, and it is gonna go a little bit towards the northeast. I think this is going to be benefiting in a big way. Vampire Esports Alpha 7 and Bigatron is going to have to decide which way up the road are they going to एक नेड है भाई. अच्छा नेड कर दिया ना इसने अगर. Action ने. Alpha 7. मेरे को लग रहा सही नेड है. SCG and Star Wars Esports. भाई दोनों लो हैं. Action currently getting shot from the back by players. दो आगे हैं S2G के और दो पीछे हैं. Down. लग गए. Action goes down to Hamsi. Now Star Wars Esports Pika trying to figure out what he's अपनी 7C2 में है. right moment. We do start seeing now 7Cs slowly but surely starting to come up. Are they gonna want to participate on this? And honestly, if I'm 7Cs at this point, just continue on to the zone. It is too late. You don't want a third party. Yes, it's good, guys. The zone gets the safe zone. Team India should go. Wow. They absolutely sent it towards the ocean, and great thing they did because they only ended up just getting one of the. क्या लगता है guys weekend की कौन निकालेगा? Shooting at Ravenclaw. Is he gonna be क्या able लगता to है connect? आपको? He's not able to get that knockdown. Now This is a Vampire huge, Esports- yeah, huge that- play by Alpha 7. Them being able to take that compound, they just saw the circle go north. Nobody was in there, and they pushed that, locked it down. All 4 guys super strong in this situation. Damwon could potentially take one of the Rod players down. They're trying to defend this off, and that's going to be a dirty fight there on the east side. Meanwhile, Bigatron is coming in on the south side. I think they're going to be fighting Falcon. Yeah, you see right now on screen. 1v4 देखो. Nick McGallis has just gone down. Damwon such a good play from him. Yeah, wonderful grenades, and that's going to help him for that match reward. Don't forget special eliminations. That's going to be huge, especially with the most special eliminations as well. 7C trash. क्यों बोलते हैं भाई बंदे chat में? Just playing it very slow, coming out from a Rough great game circle for here them. with so much water. 7. Crazy, right? Indeed. SGG. S2G का split अच्छा है. Now SGG. S2G वो हाई ग्राउंड में जो कंपाउंड है वो खाली है. जो वैम्पायर बीपी वाला पानी में क्यों है? वैम्पायर जानबूझ के वो वैम्पायर ऐसी खेलती है भाई. एक बंदा तो एकदम भाई यूसुफ भाई नाक दिया. Able to get the knock. Nice back off with the He is able to spot powerful there. He does get some shots. Very, very low. He's going to be throwing the Molotov. Just decides to back him off. Great Molotov from Bigatron right there. Taxi knock. S2G से Falcon फायदा उठा सकती है. Falcons push down here on the एक पत्थर पे है. trying to defend. Lux is still बस एक्चुअली होता है यूटिलिटीज नहीं है. also हो गया बस 5. situation where they can't get the rest off. Lux is going to push आ गया. Very little time. Falcons going to be pushing up aggressively, and this is a super. Falcons मजे ले जाएगी अब ये फाइट के. Falcons. उल्टा S2G नहीं यार. 14 ठीक है now. रो Falcon. Ooh, a lot of damage coming out here. It's a dangerous gun. Genforce अरे as well. Genforce ने नॉक दिया ना In मतलब. the middle of this sandwich. Falcons just went in patient. यार अभी भी एक बंदा बचा. End up going to SG. SG, we saw the aggressiveness from them earlier. They are going to be pushing. इनसे फूटेगा. Is going to get eliminated. Now SG is going to have to switch their focus to Team Falcons, and that's exactly what they're doing. As they're going Oh boy, Damar. Lamar is able to start the engagement. He ends up getting knocked there on Kelsey. इसको पता है ना इंडिया में डामर को क्या बोलते हैं? डामर क्या होता है मतलब? क्या होता है? Holy shit. ओ भाई क्या कर दिया? ओ भाई. Oh, full power. ओ भाई. Powerful. 3 नॉक कर देता. उसने क्या मारे बट 2 बंदे. हां 2 बंदे बहुत बड़े मारे. अच्छा रैप भी नहीं होंगे ये लोग. बाप रे बाप. कौन आ गया? ए 7 से एलिमिनेटेड कब कहां? We saw it yesterday. अबे उनके तो कुछ था भी नहीं उनके पास. एक फिनिश लिया लोग लेकिन उन्होंने पता नहीं कब मर गया. लेकिन उनके पास तो था भी नहीं कोई. नॉर्थ से मर गया. ड्रोन से मर गया. स्कोप था, डाउन एंड स्कोप था शायद. कहाँ पे गया? सीमा 1 सेकंड में बढ़ जाती है. इनकी इतनी गोलियां खा ली. लास्ट ही बचा फैल्कन का. 2 बंदा खा गया भाई फैल्कन को. एक बंदा से. Hi Piyush 1207.
rotating, but guess what? Alpha 7 is just not having any of that. They're looking at all the angles. They're trying to find. किसका चिकन होगा गाइस बताओ? A7 रात नहीं, रात का तो नहीं हो मैं सकता। पहले अच्छा विजय मैंने क्या बोला था किसका डिनर होगा? तूने बोला था VP, ठीक है। ओ भाई कितना झूठा है भाई। नहीं इसने A7 बोला था। इसने DWG बोला था। मैंने A7 बोला था बिना मैप देखे। देखते हैं चल। स्टार्टिंग में बोला था। I'll go with बेटे किसी के साथ भी जा तू जीतता अल्फा 7 को ही है। I'll go with VP bro। लेट्स सी चलो Vampire ठीक OP। है। लग गए कितने की लग रही है अब ये बताओ। हम पैसे नहीं लगाते। हाँ क्योंकि आप लोग को पता लग गया है। नहीं अगले जोन में पता लग जाएगा। हाँ लगाओ 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 जल्दी लगाओ। मैं बोल रहा हूँ मेरा भी मन नहीं है भाई बहुत गलत जल्दी लगाओ। फिर भी अल्फा 7 के साथ स्टिक करूंगा मैं देख लेना गाइस अल्फा 7 बहुत स्ट्रांग है भाई अभी देखो भाई फिर बोले कितना भी स्ट्रांग है यहाँ से क्या करेंगे एक टाइम किया भी जीत सकते हैं अब पूरा उनका ध्यान वैम्पायर्स का उधर ही है और ऊपर से फैल्कन नेवर अलोन ने मजे ले उनके पास से मर भी गया तो इतनी कंसिस्टेंट है मतलब वो देखो भाई अल्फा 7 वाटर साइड से जाएगा पहले पता है अल्फा 7 मस्ट मारेगी राड को बस जाएगी पुश करना चाहिए हां इंडी सेंटी कर दिया DWG का लग रहा है मेरे को DWG बोल रहे मेरे में भी अरे भाई इसको क्या हो गया नेट को तुम्हारा भी हो गया अरे हां रिफ्रेश मार मेरा देगा Alpha 7 is just हम लाइव कर लो DWG बोल रहा है बंदा एक मिनट चैट में who's going to be able to see each other first. Rod को मारेंगे Zeta not being able to ये लोग तो कुत्ता बन गया भाई can he get another with the knock? He does end up getting a finish there on Mythic. अरे DBS लेके आ गया भाई नाइस नेट यार knocked down by one of the Mafioso मार दिया this no he's not. Rod is going to जाते हैं भाई पब्लिक फुल अल्लाह भी बैठी है पब्लिक उधर to the DBS. ओ ये लोग बाहर आ गए बोलो भाई वैम्पायर अल्फा 7 ब्राजील के क्या हां great strategy there. They know that they currently have the advantage. अच्छा पुश है यार इनका वैम्पायर का lay down some of the nades. Molotovs as well trying to control where बोल रहे आने नहीं देना जोन में जोन के बाहर जाके मार दो के बाहर ही चले गए ये तो अब वो दो बंदे भेजे ना बस all the players up Revo trying to heal up. Who's gonna इवन क्लॉज स्टोन है बस Vampire Esports, I think at this point just decides उनको शोर भेज दिया and they need to be careful because और वो उनका एक वैम्पायर का एक बंदा जो कंपाउंड में ना किया को फिनिश eliminated. नाइस टू स्टॉप रेवन को पूरा पेट में मारने वाला है इनके अल्फा 7 thankfully to that pitch that is right there for him. हां भाई रेवो तो ओपन में पानी एक ही बंदा रह गया वो आ गया स्टोन आ गया इधर कंपाउंड Alpha 7 having a few knock players. More shots coming into Mafioso. There's two stops. Oh. Really being able to knock him. The zone is still in play here. रेवो के पास अच्छी पोजीशन है लेकिन super hard and rough terrain. डीप पे देखो उससे भी नहीं पड़ी. He is holding that rock lower ground. Fan bro, thank you. Shots are coming in. Carillo finds. Oh boy, Raven no. That is going to be huge. Can he get that elimination? Nice. Vampire Esports now in the defense. They're only going to have 2 players. They are in this zone, and they're going to have to be careful between Alpha 7 and then Mafioso playing very risky there with that jump. I thought he might have ended up sliding all the way down. Just absolutely unfortunate. Then one key up playing. जब तक स्मोक बन रहा है वो क्रॉल कर ले रहा है. हाँ वही ना जैसे वो क्रॉल कर रहा है आगे स्मोक बन रहा है जैसे वो क्रॉल कर रहा है स्मोक. To pick up. रैप हो जाएगा वो तो. वो फिनिश हो जाता तो मजा आता. Zone here did go super hard to. भाई जोन तो भी पिघा है. Oh my God! Stone finds Carillo as well. Nice. भाई जोन तो पूरा वैम्पायर पे है भाई. Be able to swing over and get him. The only way for any of the teams, either Damwon-Kia and Alpha 7, to win this is just to smoke the entire wall. So they prediction तो right हो रहा है guys. ये पर डे के पॉइंट्स अलग-अलग रहते हैं क्या? नहीं ओवरऑल पॉइंट्स. उसमें 16 पॉइंट कैसे अपने में? 16 पॉइंट फर्स्ट मैच. I really want to see some offensive smoke around that edge there on that. कल से 16 ही है कल 10 थे आज 6 आए 3 मैच में. Important for Alpha 7 to try to make that push. First, as a car. The question is, how long is Damwon going to wait until they try to push the vampire compound or try to third party Alpha 7? And with the terrain here that Damwon-Kia has, it might actually end up working. पर अभी भी फीलिंग आ रही है मुझे कि अल्फा 7 ले सकते get up and take some shots there on that vehicle.
फेज भाई भी वो लाइक गलत बोलता है तो फीलिंग आ मान रही है। देते हैं। फेज भाई भी लाइक नहीं गलत फीलिंग आ रही है। गलत, बहुत गलत फीलिंग आ रही बहुत है। गलत आ रही है। चांस ही नहीं है। बोले तो लेट गए। Damn, we are happy for second. वो पत्थर तक आना चाहिए इसको। भाई स्मोक्स तो देखो। Which is the right thing to do. You can see Vampire Esports was able to pick up one of their teammates. They are at full 3 now. 3-3-2. Then one Kia is going to end up making तो स्लैम दे रहे the हैं। vehicle. DBS निकाल लिया उसने तो। भाई अल्फा 7 ले जाएगी ऐसा रहा तो। भाई जोन के बाद से स्लैम दे रहे हैं भाई, क्या खतरनाक लोग हैं भाई। नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नॉक है, पुश। ड्रॉप वाला पीटी कर दिया लेकिन भाई अल्फा रेवन क्लॉ बैठा है ना। ड्रॉप वाले ने पीटी कर दिया। ड्रॉप वाले ने पीटी कर दिया। ओ ओ कोई नहीं, पर ड्रॉप वाले ने अच्छी पोजी ले रखी थी, बहुत बढ़िया ले रखी थी। बहुत बढ़िया अल्फा 7 1v2 गया खत्म। कोई बात नहीं वेल प्लेड। लेट्स गो। वो तो नसीब था इनका भाई। ताली दे दे भाई उसको प्लीज। ताली दे दे, ताली नहीं दे रहा भाई उसको। ये तो ऐश मोमेंट हो गया था। Oh भाई। Back to funny videos. Any of the teams that was pushed towards them, Vampire Esports making a huge statement there with that Vikendi win. Yeah, exactly. Vampire here, our PMWI. Easy, They yeah. win the winners, able to win another game here in the after party. Showdown, that's crazy. अभी फर्स्ट पे कौन चल रहा है पॉइंट्स टेबल में? अल्फा 7। But that MG3 ended up paying ये off. मेरी प्रेडिक्शन राइट थी, यस ब्रो। Actually opened it up a little bit for them. अल्फा 7 तो भाई इतनी वो है। आ जाओ सॉल्टी वीडियो रिएक्ट करता जाओ। They were so quick कौन in सी क्या shorty की आज video? डाली है क्या इसने? हाँ डालिए ना भाई। कहाँ पे? वाइटी पेटी। लगाओ विद भाई। I think they throw Around his that short utility was absolutely gone for Alpha 7. It ended up hindering them. Vampire Esports just took too much, and then one key. I mean, they had the right idea, but they were not expecting something else from Vampire Esports to also have a DBS and just be patiently waiting for them. Yeah, exactly. And now with that, we're actually going to be halfway Guys, through don't forget to eat the after party showdown, which is super Salty exciting get because channel. that TEAMM means that if you are hungry. Channel good भी performance here for Alpha 7 because means that they're going to be really far these on the leaderboard. chips are not Just how fried, much that Vampire these are Esports to catch up baked, and so how deep are they going to be able to go? आपकी हेल्थ के लिए Yeah, अच्छा है। Vampire Esports, hopefully this टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। momentum carrier It's my for favorite. their team, right? And with Alpha 7, for them to not even get the chicken dinner, but at least be able to get that second place and get some LMs while you're at it, those are going to be some great points for them too. Yeah, and this campaign so far, and also I loved Vikendi here. It's great to see another rough circle though, super far east, but we are ready to push. Forest has a इसमें car. स्पेलिंग गलत डाल रहा था We are सॉल्टी का। ready Oh my here God. with the match ranking. Next map in 12 minutes. Nice. We have a break time. It's going to be looking at how far the teams are going to be able to take it for the rest of the day. Vampire get 20 points. Alpha Alpha 7 10 We're points. getting very close to winning that match, capitalizing off of the fight between Vampire and Damwon Kia, but unfortunately forgot about one player. And Vampire is able to close things out and get themselves 20 points. However, Alpha 7 able to still build up a lead against quite a few others. We got Max. भाई H2G ने 8 finishes. To talk about this last Eliminations match, भाई क्या बात। I guess we can start things off talking about how we had another rough लगाया आपने विज भाई। going far east instead of north this time. We're not going to एक get मिनट full रुको। Vikendi game, I have the impression. No, the first time I'm seeing Vikendi back in competitive, and I feel like I'm robbed in some way. But it's still working out Rob great. you of your eyebrows at this rate. I बहुत पकाते हैं भाई ये लोग का इंग्लिश। ने ओजी की भी वीडियो आई है क्या? पेज पे आई है कुछ? Big fan Visgod भाई love from Kolkata. Thank you bro, love from Mumbai. Love you all guys. देख रहे हो? रुको मिल गया क्या हो गया? मैं लगा रहा हूँ। सॉल्टी है क्या चैनल नेम? ये सब ठीक है? वेद भाई सब ठीक है? सब ठीक है? है जी? ये देखो। हो जाए एक बार। आओ जल्दी आओ। एक मिनट आ गए। Let me गैस सबके लिए थोड़ी लीक्स। थोड़ी ये अपना तेरे 4 लोग दिख रहे हैं, 4 लोगों के लिए थोड़ी सी लिख। हाँ बूट कैंप रिलेटेड है ना? ऑलमोस्ट इसने बूट कैंप रिवील ही कर दिया अपने वीडियो में। इनमें 7 लोग को। आओ रेडी?
Go. Wait a second. I think you left my consciousness in a 6th dimension. भाई अगर आपको पसंद तो बता दो, ये हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं ओजीके, और ये बहुत मस्त वीडियो देखो। वो एडिट तो है। तो गाइस आज हम स्नीक इन करने वाले हैं ओरंगुटान के बूट कैंप में, दैट इज नोन एज द फॉरेस्ट। और इस चैलेंज में मेरे पास होंगे 3 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, बूट कैंप का एड्रेस फिगर आउट करना। So that's them guys. आगे वाले गाड़ी के पीछे चल। ऑब्जेक्टिव 2, बूट कैंप का सिक्योरिटी ब्रीच करके उसके अंदर घुसना। एंड ऑब्जेक्टिव 3 is gonna be leaving something salty inside the facility. गाइस अपन ने वो चेंज किया लोगों है, को पता चल। ये बेटर है पहले वाला बेटर Leaving था। something salty inside facility. salty इधर घुसा भी था ये भाई और उसने एक वीडियो भी बनाया। ये कहानी है आज से 2 महीने पहले की। ओरंगुटान का बूट कैंप द फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हाइप था। More than $5 to $6 million in terms of all the stuff, maybe like the boot camp, building, land. सुनने में आ रहा था कि इंडिया का बेस्ट ई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनने वाला है मुंबई में, बट किसी को एक्चुअली पता नहीं था कि ये फॉरेस्ट है किधर। ना कोई ऑफिस स्टाफ को इसका एड्रेस पता था। ओजी का डीसी नहीं है क्या? ओजी का डीसी है गाइस, पर लेकिन ना कोई प्लेयर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को अलाउ किया जा रहा था। तो जब मैं आया ओरंगुटान में एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। मुझे ढूंढना था कि कहाँ है ये फॉरेस्ट, और ये जानना था क्या हो रहा है इसके। भाई मेरे को मैसेज कर दिया होता। I'm out already. मैं बता देता हूँ। तू रुक जा। We are about to sneak in to Orangutan's super secret facility, and I'm really excited about this. My first objective was figuring out कि फॉरेस्ट का एड्रेस क्या है। इसी के साथ मैंने अपना रिसर्च शुरू कर दिया। First, I narrowed down the search to Mumbai. I compiled the data of all the boot camps in Mumbai, and what I found was shocking. Soul, Godlike, Velocity, Enigma, सबके बूट कैंप नवी मुंबई में बेस्ड थे, एंड आई वाज गेटिंग अ फीलिंग कि नवी मुंबई मेरा भी डेस्टिनेशन हो सकता है। बातों बातों में मुझे ये पता चला कि अपनी जो कंटेंट टीम है, दे आर शूटिंग अ वीडियो इनसाइड द फॉरेस्ट। मुझे ये भी पता चला कि उस कंटेंट टीम में क्रू कौन कौन है। मैंने फिगर आउट किया कि उनका स्टार्टिंग लोकेशन क्या हो सकता है। So that's them guys. उसके बाद एक कैब लिया एंड आई चेस्ड देम थ्रू द एंटायर जर्नी। भैया आगे वाले गाड़ी के पीछे चल रहा। भैया कोई आइडिया है हम किधर जा रहे हैं? हाँ वो हम नवी मुंबई की तरफ जा रहे हैं। मैं फाइनली फॉरेस्ट पहुंच चुका था। So far, we only go through the easy part and got to the boot camp. Next up, we're gonna get into the boot camp and do something salty. What? तू तो बूट कैंप करता है। बूट कैंप को इसने गलत वो क्यों दिया? मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को समझा नहीं, मतलब ये I think this should be modified. चलो play yes cut. तो गाइस मैं Cut कर दो guys, थोड़ा cut. सा पीछे रुक गया हूँ and I'm pretty close to the location right now. मैं just देखा वो लोग गेट के अंदर गए हैं and I think I'm very close to that. बूट कैंप को बाहर से देख के मैं थोड़ा सा ठहर गया। I was shocked. I could not believe that ये मेरा घर बनने वाला है in a matter of few months. But I still had to focus on the day's mission, that is to get inside that enormous mansion. मैंने बूट कैंप के चारों ओर चप्पा चप्पा छान मारा,
to figure out one opening. Front entrance बहुत heavily guarded था, so I had to look for alternatives. So apparently heavily guarded there's a lot of security in the front entrance. मैं भी दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को. Like it's practically impenetrable. इसको infiltrate करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, but I'm still looking forward to it. देखना चाहता हूँ कैसे कर पाते हैं. It's also raining pretty heavily. I think this is the perfect weather. I think we can do this. Photos से लेके videos from every corner of the building मैंने सब उठा लिया, बहुत पहले but एक भी weak spot नहीं मिला मुझे. I'm right outside the orangutan facility right now, and to be honest, मुझे अभी एक ही entrance दिख रहा है, but we cannot use that entrance. I knew I had to search the perimeter from a different angle, and उसके लिए मैंने use किया अपना trump card. भाई इनको कोई बताओ 3 लाख से नीचे नहीं आता जिस तरह से बैटरी डाली है उसने. ड्रोन से एरिया स्कैन करने के बाद I had the perfect plan for infiltration. फ्रंट गेट से मैं एंटर नहीं कर पाता because of obvious reasons. Second entrance, bamboo में चढ़ के, in spite of my fitness, it seemed a very difficult job. जान की बाजी नहीं लगानी है यार मुझे एक वीडियो के लिए. बट उसके अलावा was there another way? जब मैं बूट कैंप का पिछला हिस्सा सर्च कर रहा था, I found this mysterious opening, the third entrance, back gate. बहुत रिस्की था because ये तो हमको ही नहीं पता. मुझे भी नहीं पता ये तो. the slightest of noise. But मुझे वो रिस्क उठाना पड़ा because वही एक vibrant ये किधर है? था जो मुझे फॉरेस्ट के भाई, अंदर ये ले बड़ा जा क्या सकता है? पीछे पीछे है ये. आसान से. ये क्या कोई आ ना जाए. I'm about to break in. हाँ कभी वीडियो देख के कोई और भी घुस रहे हैं भाई. यार हमने भी मेहनत की है. अच्छा ओए, वो साइड है. ये खुलता भी है. समझ गया. अरे नहीं पहले जब बना रहे थे तब खुलता था, अब बॉल बना दिया वहाँ पे. अब नहीं खुलता ना ये. नहीं डोंट वरी. अच्छा इधर से है. भाई ये तो ऐसे रिवील कर दे रहा है. 1 घंटे का रिवील वीडियो बनेगा हमारा. वीडियो में सब तो रिवील हो गया वेद भाई. There's a few security out there, and I'm trying to just keep eating as much. ये आवाज कर रहा है, मैं पकड़ लिया. बूट कैंप का एड्रेस भी फिगर आउट कर लिया और उसके अंदर मैं घुस भी गया. बट इस वीडियो को तुम आखिर तक देखो because the toughest part of the challenge comes now, and that moment is gonna make me the best and the sneakiest भाई तो रिवील दिया. of all times. ये तो स्क्रिप्टेड है. Finally, but I can. There's a lot of people inside. I think construction चल रहा है. Just try to hide as much as possible. They're gone. ये क्यों बंद फट रही है? पकड़ लिया तो. भाई. This is heaven. I know right. Shit. Fucking hell. ये क्या है? So far इधर कोई भी नहीं है. And I tell you, this is the best thing ever. Kitchen का मुझे. This entire place seems like a chilling area. Like this is just the first floor. There is a lot left. ऊपर से आवाजें आ रही है. We'll try and be as sneaky as possible. ऊपर से आवाज आ रही है कुछ. There's a few office people here and there. There's only one which construction workers है. So I'll try and disguise as that. They saw me.
तारे जमीन पर वाली वीडियो को डाली है? सब लोग सेकंड फ्लोर में है. There's nobody in this floor and it looks majestic, guys. This is a balcony right now and I'm pretty sure idhar koi nahi aayega. It's majestic. It's majestic in here. This heist has been a success, but we still have one more important mission that we need to accomplish. वो हम करेंगे. I think I finally figured out. कोई आ रहा है नीचे से. कोई आ रहा है. Fuck. इस रूम में कोई नहीं है. This is the second floor. Make some noise. I just made some noise. Shit. Finally, this is another place right now. मुझे पता नहीं किस गोडाउन में मैं आ चुका हूँ. कैमरे का बैटरी पूरा डेड हो चुका है. But right now we are going to complete our objective. हमारा जो third and final objective है, हम एक sign दे के जाएंगे उनको कि मैं इधर आया था. If you guys haven't subscribed this already, भाई डब्बा बहुत महंगा आता बताया ना इसको. You are missing on a lot of content. सबसे best content मैं बनाने वाला हूँ, and it's going to be epic. I hope इस रूम पे अभी कोई ना आए, तो देखते हैं. But for now, we'll ride. I think this is enough. I think this is fine. अभी मुझे यहाँ से निकलना भी है, so it's not going to be easy, but let's see if it happens. Guys, successfully. salty का पेन ये मेरे को पड़ा हुआ मिला था. अरे वाह. मिल गया. तो मेरे बगल में है. हाँ? ये रूम तो बगल वाला ही है ना मेरे. हाँ. I think that's about it. कोई आ रहा है. There's a lot of people in here, and I probably would have to hide inside the server room right now. I've done the job. मुझे लगता है कि they will figure out. Shit. Guys, I think I'm trapped in here. They might just be looking out for me. मैं बस दरवाजा बंद करके I'll stay in here for a while right now. I hope they don't find me. Lock कर दूँगा. But don't forget to like, share and subscribe. क्या तो कि वो अंदर है कि नहीं? और लाता रहूँगा. And if you guys give 2,000 likes to this video, मैं पूरा bootcamp delete कर दूँगा. For now, I'm just staying in the server room. जाए तो जाए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. नेक्स्ट कर दो वर्ल्ड का बूट कैंप. आओ ना चलते. आजा. नेक्स्ट वर्ल्ड का बूट कैंप जाएगा. हो चुका है. होने वाला क्या होगा? 7C की फाइट हो रही है. जल्दी आओ. अरे गाइस वेट. Greedy there, Aladdin succumbs. You heard away. Will get traded off. Sarang though, last player Yeah, standing the 7C, door shut in his face. Last banda Sarang. This res, but out comes Zuxi. It's taken Nice try, Anti. Is going to be able to clutch this one out. All four of BTR stay. ये उर्दू में भी हो रहा है. Quickly select carefully on board, but it's Stalwart 4 eliminations and BTR with the same. So I don't know him, but ये अपना accent इतना British में है. Try hard क्यों कर रहा है? भाई वापस 0 पॉइंट में मर गया क्या? उसको बोलो कि वाटर बॉटल बोले एक बार. वाह. bring things back. Had a great 0 पॉइंट आया अपने ये मैच में. Some really interesting plays that they pulled through. I think Schweppes jumping into the water. कल का दिन भी है ना? हाँ कल लास्ट डे. Things a little bit too far, even so. कल 3 सेकंड लगा के देखना. 3 के दिन. Take that victory home for them. But now it's Stalwart versus Vampire Esports, hoping to get a little bit of revenge for what happened in the PMWI. I think everyone was S2G भी मर गई. अच्छा PST नहीं मरा है. At the top in terms of the standings, with Vampire Esports came out of nowhere and just continued blasting in that tournament. I'm not too sure what happened to S2G there. Did they go down first? I thought they'd managed to get the first team elimination, but I think I was mistaken. They were the first team elimination. Oh well, that's the opposite. Felled by Stalwart. Ah, okay, right, okay. That's fair enough. To be fair, S2G,
have had a lot of money so far. I think they were at 50k at the start of this game. Yeah. They are doing absolutely fine for themselves. So, spread the wealth. Share exactly. You know what they say, sharing is caring. Like so all these teams hoping to take home a little bit of brass by the end of it. Should be very nice to add to their totals, especially the teams that did qualify directly from the PMWI, our top 5 from there. And it is BTR who starts this game off very strong, but it's Stalwart who have remained consistent, I would say, throughout both tournaments. They're still yet to be at the top, and with the current streak that Alpha 7's on right now, this team is looking good, but Stoned, as I say that, will knock one of the players from Stalwart very, very long. So unlikely seemingly the one to move, top on the far side. Very, very resible there. Will just slow them down on the northwestern side. The circle really not posing a threat to anyone right now. Alpha 7, no one really in front of them at this stage. Should be pretty much a vibe. Rod, with only one player left though, potentially getting pushed on. Was that another knock onto action? That was the guy going for the res onto top. Now Scry has to reposition. Pika's there left. The last person trying to suppress his angle. Excellent hold from Vampire Esports. Deja vu, I think in this place before. You know, we're trying to head up to get the rest, but Stone's having absolutely none of it. Take some shots. And at this point in time, you're kind of calling back to the boys saying, I think it's not likely they're able to scale the top side there. And you know, even though they're so clearly in range, उसका क्लाइम पूरा दिख रहा है उनको नहीं जा सकता अब शायद but with only the red dot, that's going to be hard. Apparently, not that hard though for Pika. Already nailing one over towards Schweppes. Going to be after backing up. दोनों को डाल दिया क्या? Top flushed action flush. They are going to go down. Vampire Esports add 2 to the tally. कल सर्विसेज का पता गनफाइट हुआ था इससे एसटी से the Scry suffered before. It wasn't likely to go for यार it again. Ravenclaw, you saw him before in that fight, to a big off angle. Kendi, slightly less of an off angle there, but this one is absolutely insane. What a wild sprint this man has made. Incredible. Really, really smart. I think this is a suppressor on the front of the rifle as well. Falcons close है यार इसके. A little bit harder to figure out exactly where that's coming from. Although these teams will have their wits about them. They'll certainly know a general direction. Now for 7. Also taking shots down towards Deadeye's guys. Like for all these games, they are the ones not to be messed with here. In the after-party showdown, look to rack up even more cash for themselves. You know, we may say sharing is caring, but it does feel like Alpha 7 would like the lion's share to themselves. Sure, they might hand out a couple of freebies, but for the most part, it's theirs. Handing out plenty of L's though for हरी कौन है? these teams. Deadeye's guys take one themselves. Alpha 7 though. Falcons है ना? Revo in the process. Green? हाँ. Green हाँ हाँ. भाई. Looking to take care of Stalwart. ST all dead. Will be the end of them. Vampire Esports pick up a team elimination. They are looking to get a little bit more. Bigatron at their western side. If they don't know they're there, but they should be able to scout this one. It looks like Bigatron know this position's going through. Is this the exact situation that Stalwart were in against Vampire Esports? Let's see if the tune has changed. You do like the Vampire वो body पे आ गया taking up the exact same position. चलो भाई मेरे को तो भूख लग रही है मैं अपना फेवरेट फ्लेवर खा रहा हूँ कोरियन का गाइस आप लोग Deja vu today. I'm going slightly insane. We'll see if BTR can do the same. Work towards them, but there are shots sent back. मैंने वो करा है मंगाया है. हाँ. मैं तो दूंगा नहीं obviously. I mean, ठीक है भाई. You'd have thought. मेरा आएगा तो खा लूँगा. भाई इतने दिन से मैंने ओपन रखा है तब भी वो नरम नहीं हुआ भाई. यार वैम्पायर को पड़ रही पता है सेम सिचुएशन हो रही है सेम सिचुएशन पे वो जगह बीटीआर ने ले ली. वो नॉक हो रहे हैं as fast as possible on the swivel. I hope he's Apex का कुछ सीन हो सकता है क्या पता नहीं ब्रो और के ऊपर so he can be swiftly sliding from left to right because he will need to in that smoke. And now even Alpha 7 are taking a chunk out of them. Goodness me, Vampire Esports, you should have known that spot was bad when you took apart Stalwart the way you did. Need to figure out how to
escape from this area, right? Yeah. You need to disengage from this engagement. It is not going well right now. Unless they can get a pick or two, and if you're going to land that spray, it could be good. Sweps, oh, gets to cover, just about has to put the rifle away and hit the decks, try and get some healing done. Ah, yeah, Not going to spot it just yet. They see Stone instead. Just dancing around. This guy, happy feet. Yeah, and I mean, I said that he'd put grease on the soles, but looks like, you know, he switched out the trainers completely for a pair of some ice skates there. So he is really, really making it happen. There's not much ice on this map to be, you know, skating around on, but he makes it look good either way. I feel like ice skates would potentially be the worst shoe. For इस बार जो डांगा होंगे ना, real good grip. हाँ, that's sponsor Adidas है. Yeah. That's the entire purpose. They'll go straight into the sand. He's not going anywhere. He could really plant his feet. It's like having nails on your feet. And that's what you don't want, surely. It's like the poor man's crampon. Is it? Yeah. Oh, okay. I feel like ice skates are quite expensive. Yeah, but if you got भाई डेजर्ट में आइस स्केट्स कौन चलाएगा बताओ? Yeah. Maybe put a pair on your hand. कैसी बातें कर रहे हैं बंदे? Yeah, then you're really good. बौखला गए. On the side of the cliffs. Unfortunately, it's kind of hard to handle a weapon. Yeah, I'll test that. If you don't hear from me, can you please ring a helicopter? Sure. Yeah, I'll get right on that, certainly. Looks like Vampire Esports have moved a little bit further into their position at this time. Nigma Galaxy not really taking shots. Alpha 7 slowed that engagement with them. Bigatron on the northern side, potentially looking to try and change the path of history and not push onto Vampire's position and take up that spot. Not just yet, anyway. Could change. It could change. I mean, Zuxi's taking that off angle right now. You can see it. Vampire Esports, they've managed to get themselves a good lineup with the next circle about to pop in. Does head over towards the east side. ये NGX वाले जो एक होल्ड कर रहे हैं ना, शायद ये इंटरनली कनेक्टेड होता है. नीचे से. हाँ, नीचे से. It's one of the main combos. हाँ, ये वहीं बैठा था शायद वो बंदा कल. Looted. Searching for the medical equipment. Nigma Galaxy in front of Vampire Esports, you know, they've been harassed. पता है मैप में कितना दूर लग रहे हैं सब पहले बहुत क्लोज होता है लेकिन. Dodge fairly quickly. Now Zuxi, this is that off angle we were talking about before. एक पहाड़ छोड़ के. हाँ वही एक पहाड़ छोड़ के. Also, dropping the suppressor on board, very important piece of equipment considering you are on the off angle away from your team. You cannot give away your positioning. First airdrop was collected, R8 SK10, which does mean, of course, blank. That's some more money for R8. Beautiful stuff. इसके बाद एक मिरामार और एक रैंगल है ना? नहीं, रैंगल नहीं है अब. कल एक ही होगा. So far that they've earned. Starting on 2K, you will definitely. Just sign up, फिर मिरामार. Well, if you want to continue to stay up to date with all the money these guys are able to put in the back. अनक भूल गया यार आप मेरा favorite map. The PMWI अनक together, so you can हुआ watch तो with एक us ना? in-game over at the esports. अच्छा नहीं वो दूसरा था show event. PMWI special sets. And if you want the gun skins and the outfits from the PMWI, there are PMWI packages on sale for a limited time. You can also win PMWI अपनी जो showdown था PUBG Mobile better थी भाई outfit. PMWI. To crack out the phone and get a little bit of PUBG Mobile done on the fly, perhaps in between, on the breaks. Though the guys on the desk, they are very interesting. Drop some good knowledge, some good jokes. Can't go wrong with that. Well, there's some good ones. Good jokes. हाँ ये कनेक्टिंग वाला ही है बराबर. वो देखो ना होल्ड कर रहा है. कैमरा में दिख रहा है लॉर्ड का. Some of them are awful, horrible jokes. Did like the explainer. Sometimes you do need an explainer though for the desk when it comes to playing basketball. Some interesting tidbits that I'll bring out next game. I mean, we are all massive nerds here in the broadcast team, so that I think it's fair enough to try and explain any. Basketball facts. They're coming up, so you have to wait for the next game to hear about them. So stay tuned here for the After Party Showdown. Oh, I'm excited now. Maybe I'll find out what basketball is. Who is a Kobe? That's right. Who knows? Very, very famous though. Vampire I think Esports. you should know. That's fair. Vampire Esports quite close to. भाई कितना close है बंदा मार दे. Down to 2 players. Oh boy. In a spot of bother of their own. देखा आपने क्या भागा भाई उसने? Going toe to toe with the Titans of this बाप tournament रे so बाप. far. दो shots पड़ी क्या? Like तो वो अकेले नहीं मार दिया. Alpha 7 suffering a little bit as Bigatron try and push through, but the blue zone is going to put pressure on this. उसने क्या भागा है भाई? Down close.
to Bigatron's line as they move forwards. Not really going to be able to do बहुत चलाओ ये game. this one. What can the rest क्या of the squad नीचे do? वाले कितना इरिटेट कर रहे हो, खेलने ही नहीं दे रहे. Warnick Galaxy holding that out. Zuxi descends from the hillside. तो भाई उसने knock कर दिया. Starting to fall. Carrillo and Mythic, 2 players alive for Alpha 2v2 7. ही है यार, मार सकते हैं यार. Still in action for भले. Bigatron. There's Liquid to go down. Mesuri trying to push around the side with the UMP in hand. It's not anything yet, but it does force Alpha 7 into नीचे से vampire से खा रहे हैं. There are shots along the way from Schweppes. भाई ये भी खाएंगे. ETR, but now Alpha Right 7 क्यों नहीं जा रहे जहाँ from बढ़िया. the same angle. Neither of these teams can go for this engagement under the purview of Schweppes. They have to disengage. Zuxi has पता मैं BTR they can't ये push भी नहीं onto हूँ. this position. The only option is to push Battle करना right पड़ेगा, around this rock and try and engage that way if you don't want to be spotted out there. And that's a really difficult run to make. Both of वो Alpha sticky 7 bomb फेंक रहा है वो. their sights set on Zuxi. Nades. तो होता क्या है? आपने खेला क्या करेंगे? Thrown on. हाँ, टाइमर के बाद फटता है वो. Got it to Zuxi. रेस ये दीवार बंकर फोड़ने के लिए होता है बंकर. हाँ, दीवार पे चिपक जाता है भैया. हेल्थ से कुछ भाई भी चिपक जाता है. हेल्थ कम होती है क्या उससे? हाँ हाँ. अरे फट भी जाता है तू. With Schweppes going down, that sight line is suddenly freed up for just a little bit. ग्रेनेड ही है समझ ले. बस वही कि टाइमर के बाद. और वो पास गिरता है तो टी बचता है तो सामने वाले को भागने का टाइम मिल जाता है. Shots from outside in the blue. सब रिफ्लेक्स में बट. Nade, Molotov trying to find a. मतलब सैनॉक भी देखना आप भेज भाई. डैमेज होता ही नहीं है ज़्यादा. फिर भी डैमेज देखो कितना कम है. जोन तो अभी बड़ा ही है. पर सैनॉक में कल डैमेज ही नहीं था कुछ भी. फाल्कन को देखो जरा. अरे बाप रे बाप. अरे वो लग रहा है ऐसा पता है क्लोज ही है वो लोग. हाँ. छोटा जोन है बहुत. नहीं बट पूरा जोन कंट्रोल है. मतलब नॉर्थ. कब तक दिख रहा है ना बड़ा जोन है बहुत छोटा जोन है. Somehow Alpha 7 still making it through. You see D77 though off in the distance, just dropping the first aid kit in. But Carrillo still has this on lock. Slowly taking out players, but it's Zuxi spots him out first. And he's managed to make his way in. The sticky bombs, they were not enough to stop Zuxi. This guy has been on tears before, and he doesn't like Alpha 7 भी लग गए. Zoom. रेड वाला भी मारेगा पीछे. Circle, but D77, that angle that made absolutely whiffs every single shot. UMP जिसको पता होना चाहिए था क्या करना है. Now out of the blue zone, he can turn his attention to the next line. Needs some crucial shots here to land. And makes it work. Literally, a turnaround for Mythic. He's last man standing now for Alpha. Left. Engagement. Nick the Galaxy अरे जाओ यार. D77 painting a rainbow above his head with bullet marks. No man. Undisturb. Yes. हो गया. Stars right now. आपको चाहिए क्या? That's rude. हो गया That's a ना? little bit rude. Go on. BTR वाला ने हिल बैटल कर रहा. Himself back in the action. और क्या? Again. अभी इसमें. Pretty well here. They got some मिथिक तो भाई देखो क्या सर है. starting to try and increase. कम 24 घंटा बस यही चलता रहता है. Makes the long run across and no. इसमें भी पता है वो आवाज जो थोड़ी आती है जंप पंच की. वो आती है इसमें भी पता है. फिर भी करते हैं लोग. Falcons, I mean, they dominate the zone right now. Oh! Really a question of who वो भाई उसने वो फोड़ दिया शायद. नहीं ज्यादा वो आता है. स्ट्राइक है. बाइनोकुलर आता है. बाप रे. जिससे तू कहीं पे भी वो कर सकता है. नहीं ऐसा नहीं होता. कंपाउंड में अगर कहीं पे ज्यादा कैंप हो रहा होगा ना कहीं पे बहुत टाइम के लिए तो उस पे एक ब्लू जोन बन के आता है. रेड जोन और वो उतने एरिया के घर तोड़ देता है. एक बाइनोकुलर वाला भी तो है जहाँ पे आप एम करके फायर करोगे तो वहीं पे बॉम्ब गिरने चालू हो जाएगा. है इसमें. हाँ ये कैरेक्टर में है ना. इसको मार दिया तो भाई Alpha 7 वो आ जाती है. थर्ड आ गया. भाई फैल्कन वालों ने पॉइंट ले लिए. होता है वो. सीख ऐश सीख कुछ सीख. हमारे बनने का कुछ करना है. सीख ये क्या करना पड़ता है. क्या करना भाई थर्ड आ गया. वो कहाँ से कहाँ आ गया. कौन भाई बॉम्ब फोड़ा भी. BTR वाला. अरे BTR वाला बंदा हील बैठा. अरे तो मैं तो ये कर करके थक चुका हूँ भाई. आप लेकिन तेरा कोई दवा. अच्छा तूने सिखाया था ना. यूएमपी निकल जाती ने तो सिखाया था यार. अरे एक टाइम पे एक बोलो भाई. बटन दब जाता है. हाँ हिल बैटल नहीं होता भाई. मैं वैसे सरवाइव कर लूँगा. हिल बैटल नहीं होता. कभी डांस करेगा ये. वो फोन का गलती है. बहुत गोश्त टच हो जाता है. अरे वो अपने इसमें डैमेज भी इतना नहीं रहता भाई.
तो डैमेज बहुत ज्यादा था अपने किल ही नहीं होंगे भाई कुछ भी। Send that rocket. सेकंड आ गया भाई वो। डांस करेगा बैंडल लगा। See if he can hit him. I don't think he will. वो दिखाओ भाई। Falcons with the position. सेकंड आ गया भाई वो सेकंड। It's ended here. It's a nice win for them. And they'll take the डैमेज ही नहीं पड़ रहा है कुछ। If they don't get this elimination, I feel like Bigatron Red Alien most eliminations. If it goes down to the blue zone, potential for them to be pipped to the post. I mean, they'll take the 10k for the chicken dinner. वो तो वो वाला बॉम्ब लेके घूम रहा है। Oh, Panzerfaust potentially spotting it. Yusuf, he's on the broadside. I think Zuxy's seen it. कितनी बड़ी है इसके पास। I like the Never Alones there doing the same emote than what they did in their team parade send out. It's true. Yeah, it's nice stuff. You know, cosplaying as yourself in game. That emote was created for Team Falcons, in fact. Hells yeah. No more. Only one more first aid. Take that back. I apologise. He spotted Damar. He's got to have done, right? And now he's going to lie down. Oh, that's unfortunate. Yeah, he's not getting back in. Sticky bomb on the floor. Time to go. See you later, boys. Boom, boom. कौन से मर गया भाई? ये सीरवी जैसा नहीं लगता थोड़ा? ये नेवर अलोन है। ये जो जिस पे अभी कैमरा था। वो शायद नेवर अलोन है। हाँ लगता थोड़ा दिखता तो है। You do like those. Yeah, dominant win as well. They didn't really have to do too much. चलो भाई, मेरी तो वॉच पार्टी हो गई। मैच चला। Just kept it nice. बैलो। अबे वो स्ट्रीम करना। वाइट की स्ट्रीम ऑफ करना है। बोला? हाँ तो 2 घंटा हो गया ना मेरा। चारों मैच 6 के 6 मैच करने थे ना, ऐसा कुछ था ना? ऐसा भी है क्या? नहीं मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता। मुझे क्या, मैं तो फिर कर लूँगा। 6 के 6 होने मेरे रूटर का भी चल ही रहा है। मेरा भी। बेस भाई ये बीटर वाले स्टैटिस्टिक्स लिख के रखो। पे सुन लो। ठीक है डन है भाई, आपने बोला था डन। मैं फिर वो कर रहा हूँ, फिर 1 सेकंड में आ रहा हूँ। जस्ट राइट बैक। 1 मिनट। हाँ मैं भी राइट बैक। गाइस मैं भी लगा रहा हूँ। 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट्स ब्रेक जब तक मैं 2M खा के आता हूँ और आप 2M के एड्स देखो भाई। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है 2 यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट में 40% कम। 2 यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। हेलो, आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। ब्रेक है क्या? गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है 2 यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। 2 यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है 2 यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। 2 यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है 2 यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। 2 यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है 2 यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। 2 यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में।
गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में, दही बल्ले के नुक्कड़ पे, रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स। Guys, I'm back. You're still eating toyam. तो ये बहुत टेस्टी है। क्या करूँ भाई? माइक बंद है क्या शायद? क्या है? मेरा माइक ऑन है, मैं डिस्कॉर्ड में पुश डाउन। भाई सैनो के आ जाओ आ जाओ। The way that the hoop is set up, you know, toss the basketball up for a cheeky three-pointer and it go to the मैंने top बताया of the hoop and still look like it's gone in.
So you have the net there also to ensure that everyone on the court knows exactly what's happened. And already, some absolute carnage क्या चाहिए? here in Paradise. कुछ नहीं है. There it goes. I will take you STG, double down. 5K in the bank. Easy peasy, lemon squeezy. Not only that, first elim will have been going over to them as well. 7K for that Steal. All right then, Oi. STG not happy about बस how dialogue this मारा मैंने. game went there and just immediately wanted to take the Guys, we are back. RA Esports, and they've Which one? absolutely Is done that such a Papri? thing. Take And it. Silas This is the gets right that nice little team elimination right there at the end. No, this is that. That's their property. It remains between us, man. You don't go out and tell people. Let's talk about the circle. This is a... It's fairly extreme, you know. Some might even say extreme if you were Max, man. Or we are. I'll tell you what is extreme. Okay. Is the fact बाद में that if खाएंगे. you watch अच्छा माइक खुला था क्या? game with your friends, you can win PMWI special sets. That's pretty wild. That's pretty extreme. I will say that your segue was less extreme than what I was expecting. I'll give you extreme in a minute. Right. Well, you can have extreme in a minute, but बताओ China कौन, guys? yourself up a PMWI gun skin and outfit. Oh. Those PMWI Is packages right? on sale for a limited Ah. time. China Just who? as limited as how fast this fight went for S2G, and you can Da win Vinci. PMWI treasure chest if you play PUBG Mobile during the PMWI. हाथिंग का circle है ना? India. Very good. Python. Circle कहाँ का है? पता नहीं, आया नहीं पे. Potentially, well, they will have to leave it fairly soon. Alpha 7. Occupants in Camp Bravo on the northeastern side. No one really challenging them very, very locally, but you've got Team Rad up a little bit further north. And that's really the only team that's sort of in their proximity. Central. Let's go 7C. हमारे घर पे देखो कौन बैठा है? I'm really liking about these lobbies at the moment. It's just the splits that's coming through on Sandhawk, purely because we only have 12 teams. A lot of these players are much more comfortable to take extreme splits. हमारे घर में STE बैठी है. You can get as much loot as possible. You can even see Vampire. Hey, bye bye, heavy watching. You can't Bye, right come, now. come, like what I will Just come back up again for you, but I will tell you because I am nice in Hey, a look, way. You got Vampire Esports holding 2 towards Camp Alpha and also towards the Confluence, and then 2 down towards Tambang and Ruins, which gives them really, really good control over 2 of the major areas on the map. That's Southwest and also Northwest Islands. So really good stuff for Vampire Esports. They can kind of determine where they want to go as the game progresses. Right now, I would probably assume the Vampire Esports Stone as well as Fluketh are going to be moving up from Ruins to regroup with Schweppes and Ravenclaw. That would seem to be the optimal position. I I feel think- like that's this is exactly नहीं. Spray God. right, and that's exactly what they're going to be able to operate on. Huge stuff coming through from Vampire Esports. We've praised a lot in general, even during the main tournament last week. Their seeming game sense in terms of these rotations, in terms of these positions, and knowing when and where to be. Seems like they are carrying that over quite well into the after-party showdown. Certainly well in this game. Yeah, the macros turn Correct, guys, only guided. for a lot of these Yeah, teams. very Vampire funny. Esports have certainly been able to cash in a chunk of money just with the macro that they've been displaying, getting those chicken dinners, that 10K. It's a lot of money for a chicken dinner. So, you know, a lot of these teams are searching out for it because you can get special eliminations, you can get the team eliminations and those very first elimination of the map, but that 10K, that is a consistent. That's always coming your way if you do play the game out very, very strongly. S2G though, they've got a bit of momentum here. You know, they've put आपको पता है? chest. They're First team elimination पे भी शायद $5K है. You know, you're feeling maybe a little bit. First down. elimination पे भी $2K. Even if you get that full squad wipe coming into Sandhawk, you know, it's not. 6,000. You know, you feel good about yourself, but getting it. $6,000. $2,000 first elimination पे. और first team elimination पे शायद 5,000. It does. I'm looking right 6,000 है वहाँ पे. now. अच्छा अच्छा हाँ हाँ. Feel good in this lobby. The airdrop over on the northern side, close to down 1 Kia, under the purview a little bit of 7C. But if S2G swing around, they might even be able to get the first airdrop. You can see it on the top side of your screen. Sung though has got that info, baiting out the 1K bounty for it potentially. I think that right now we're starting to see more and more DBSs through the lobby. And it might be a DBS showdown for
the loot crate itself. And props to Fabian for really popularizing this method in the PMW. Some sick matches on Miramar with that weapon. We're all happy to see it. Kalaris is super क्या happy to see it. Stands for कैमरा देखो कैमरा The big shotgun. the big shotgun. That's right. Of course it does. Yes. Is that in your Oh my hand? God. Canonically. I choose to not answer. आज टिके चला गया तू That's okay. You know, no comment is a comment in of itself. Down one game. Here, just down this side. Holding. तुम्हें चाहिए तो जल्दी आ जाओ एक दही पापड़ी होता है Just everyone's baiting out the air. I mean, $1,000 if you can get the most team ये नहीं eliminations, मिलेगा it's a फिर big chunk of money there. So you really want it to be very, very safe before anyone heads out to even touch this airdrop. You can see teams surrounding. First जो airdrop लेगा उसका भी वो है भाई. Western Island here. और top 3 जो It gets spotted out. I don't know if that was by वो है देखो players. or even Stalwart or Deadeye's guys अरे on the अल्फा south 7 side, but Ravenclaw did get knocked. I imagine it's in this engagement because you can see another knock coming through from Vampire Esports down the hill towards the Deadeye's guys as point break will be Fluketh on the south side of the formation for Vampire Esports. Ooh, that is a nasty one, but it will play out nicely for Vampire Esports should they be able to get this player back up in an action. It looks like Deadeye guys have taken look at that. a little bit of damage for themselves. Sliver of HP left on, I believe that's Chari who's getting red there. Spotted out on the hillside. Fluketh still raining down pain on Deadeye's guys who are right with their backs to the blue on this next zone. They will have to move. And Vampire Esports, they're just going to have complete control over this terrain. I think Fluketh, we talked a lot about Stone and how he's almost that star player for the team, but I think Fluketh and, in fact, the whole team is very, very good. But I think Fluketh as a fragger is kind of, you know, we don't talk about him too much, but even in that first day of PMWI, on a angle where they got a ridiculous elimination score, I believe it was 24 total. Fluketh was one of the main contributors to that, and I think he has really supported Stone very well in that regard. Well. It's fantastic to see. You know, they really do have all their own little roles on the team. And नेक्स्ट टाइम MVP का जब गेम आएगा तब ब्रो विजगार्ड नो कुछ नया बताओ ब्रो बिग फैन ब्रो अरे मल भाई थैंक यू कीप सपोर्टिंग Those off angles. भाई अलादीन के 3 फ्री किल. Time and time again coming in so clutch in those fights. It's और अलादीन उनका फ्री किल तो विजगार्ड भाई बैठा हुआ है वो देख भी नहीं रहा है some of the best in the world. That loot crate is still just poison, by the way. भाई वो देख भी नहीं रहा भाई No one wants to head towards it. I think we need some kind of taste tester from the lobby to head on over. Oh, and another one drops. भाई वो देख भी नहीं रहा भाई देखा अब देगा फ्री किल्स है भाई तो इजी दो तो लेके जा सकता है The lobby, but damn one. ले लिया अलादीन ने भी एक लिया. Oh dear. क्या बढ़िया नाइस यार 7C though. Love and life right now, Fabian. About Hello, brother, big fan. Thank you. Pops on Okay. out, shooting the railings, not going to do too much though. Back into the pickup. इसको दिखा नहीं पानी में भी Control the bridge. I like this spot from Aladdin. He is slightly low nice here though, but realistically he just needs support from Scout, Sarang, and Madman off in the distance. He just provides info, hits a few shots, and is very safe inside that pickup. Difficult to get to him in there unless someone takes. उनके खेलो भाइयों नेशनल गेम खेलो For 7 going at it again. BTR here. BTR down towards the south, just the west side of Paradise Resort. कल के दिन में दिखेगा कल के इसमें एकदम ही योलो खेलेंगे क्योंकि फिर कुछ रहा नहीं तब तो It's Enigma Galaxy who have made the big run through the Western Island. They're right behind Deadeye's guys now. Vampire Esports did move up a lot further north, so that traffic jam has shuffled along. But it is, you're right, the Hamodi has now leapfrogged the position from Deadeye's guys. They're on the compounds in the northwest. No one really in those exact compounds to challenge them. Can Vampire Esports get the bead on them, get something done? Those loot crates, by the way, those airdrops have still yet to be touched. Like I said, man, they do have spikes on them. You got to be careful because getting too close to an airdrop. अच्छा कार्ड है BTR का Pelgan be like मैं तो आऊंगी नहीं जोन में मैं तो आएंगे ही नहीं I think they really do have to be careful. They've all taken up compounds on that northwestern edge, as you can see. And I think this is where they start to scout out, figure out where all these players are rotating into. Okay. Really have
a definitive area. अबे अलादीन को वहां से निकल के सीधा शोर पे पहुंचना चाहिए, सीधा शोर. They're holding. I feel like it is looking more like a Northwest Island finish, right? I mean, you have only got a fairly tiny chunk of that mainland, but we've seen crazier things happen, right? Certainly plenty of hard shifts going on today. So on a hard eastern shift, there is still potential. But those crossings that were made early, good news. Things like Stalwart moving across from boot camp, it feels like they've made the right decision. 100%. 7C though still being our fishermen's in the lobby. Throwing the long line with the airdrop being... अबे BTR का काट दिया A7 ने. वहाँ पे कैम लग गया बेटे, ये लोग बाइक से निकल गए. These teams are very, very smart with it, I suppose. बहुत सारी थी भाई. To catch a lot of these teams being... मैडम ने मारा क्या बात है बड़ी. STG though, they have moved out with the boat, and it looks like Madman was able to hit very, very dirty. रिवाइव मिल रहा है. Silas though, पानी तो मिलेगा. shots of Madman. बोर्ड के नीचे मारना चाहिए अंदर. हाय हाय एक ओपी सेटिस सेवा हेलो. मार 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 मार. अरे वाह 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 वाह. Ray's knock did just come through. अरे और एक मिल गया. नाइस. स्काउट तो नहीं खिला. स्काउट तो खिला नहीं. It's gonna be difficult, but they got one. Silas just trying to provide support, but I don't think he realizes that from that angle, Madman can just peek on the left. Kills. Wow. Trying to suppress, but the suppressing fire is just not going to be never going to be a problem for Madman. If Silas Were they trying to go for the loot crate? I think they और से अच्छा but it feels like STG really have kind of ये हमारा glitch है क्या? just trying to look to cross more accurately. There's another loot crate. STG वही A7 भी kill चोरी है. हाँ वही मैं बोल रहा था. कोई तो और मार रहा है. Very, very dangerous for these teams to attempt it. So I think right now it's the chicken dinner that's on the cards. और यहाँ पे राइडर्स प्रोवाइडर्स सीधा 7-6 के बाद स्लैम दे दे. Less players in the lobby. Falcons और kill दे दो. अरे taking up position. अब रुक क्यों गए? गाड़ी बढ़ गई. शॉटगन. रेस्ट इन पीस. वो तो कट लिया. बोल रहा मैं तो चला. तुम मर जा. सेकंड में चल रही है बाल के लिए. Other than try and just hold on for dear life. The flank comes through. There's It's just me, myself and I. बैन कर दिया. बहुत अच्छा लगा सेंस में. हाँ दिख रहा है. Has he been fried? Is he easy? No, guys, 7 Solo ride until I die. Never alone, tosses the nades over the top. Hope so. ओ फैल्कन का एंगल. भाई दोनों जाएंगे. There's another player heading towards that location. This could be very. Oh! एक तो गया. एक और. Oh! I never alone. Oh! On the swivel, Ralph now on the back angle could have been pivotal there, but didn't slow down the push from Never Alone. कैसे कर सकती है ये? Team Falcons with and for powerful at the back, but once popped over the top, it will suppress the angle and has the backup for the rest of his team up the top of the hill. There's started to jump as well. Never Alone taken care of. Deadeye's guys handle the back lines, and it is all falling apart. Big fan, Array Spider Gaming. Hello, welcome to the stream. We are doing PMWI watch party. Making the long crawl across. There are guys who have their sights focused over towards Vampire Esports, so you know potentially there's a chance here that Nick Megani gets at least 3 players back up on their feet, but maybe not with Shifu, who is actually moving. भाई मैं बस सोच रहा हूँ इनको कितने किल मिलेंगे भाई. बहुत किल मिलेंगे भाई. लोग अच्छे छोड़ दिया. Pick up one of those crates out in the water in the meantime, but you have to think that Deadeye's guys have made this choice consciously. They were ahead of both Enigma Galaxy and Team Falcons in the queue on that western side. They have chosen to stay behind. They have chosen to be bye. Turu love sir. So Deadeye's guys were able to make a nasty little bit of damage over there. Revive हुआ है भाई वो इंजेक्स वाला. दो बंदे हैं. दो बंदे ऊपर. Thrown all of these teams into the finish हो गया यार. Starting to boil now here on Sandhawk. Bubble, toil and trouble. क्या बोल रही है? भाई A7 पहुंच गई शोर. Cauldron on the northern shore. शोर छोड़ दिया गया इन्होंने. Making their way to land and be able to do so. Trying to challenge position potentially. Carrillo trying to shimmy up the cliff and Bang वाले मार नहीं रहे. तो zoom के साइड पे. Sada moves out of the line. Unfortunately, barrel-based fish for the players at the back.
तो पानी के अंदर से मार रहा मां कसम But they are right on the हातिन के अंदर घुस गए सारे have to start to pick गया the moment to head further in. एक बंदा पीछे से मार रहा है ना इनका रेवो हाँ 7 का ये 20 के बाद कर रहा है रेक्स कवर भी नहीं दे पा रहा भाई रेवो पानी में है। रेवो पानी में बैठ के मार रहा है नहीं मार नहीं रहा है वो तैर मार रहा था गाड़ी रेवो ने मारा था अच्छा अच्छा भाई क्या हो गया ये लोग पता बीच बीच में यही करते रहते हैं आपको पता है अल्फा वाले बीच में कहीं भी फायर करने लगते हैं प्रैक्टिस करने लगते हैं सही में या तो वो प्रेजेंस दे रहा होगा They have got a healthy tally and a healthy earning from this game already. We might not get the chicken dinner, but we will get those match rewards. And for Aladdin 2 free kill क्या बात है? It's been pumped into every single one of these matches, you know. Aladdin भाई please देख लो इनको please. And I fully respect S2G in the game they did here. Shifu. Ooh, close auto shotty in hand. Powerful has the UMP, but neither of them gonna shoot off rounds. Neither. Lord is traded off Deadeye's guys though. Managed to find Nick McGallagher. क्राउड को सुनो क्राउड को हाँ सुन रहा वो तो छोड़ो वो कितना क्लोज आ गया ब्रूनो के Oh he knows. बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस Oh he knows and he is going to shut it down. Liquid Reaction knock बहुत बढ़िया still crawling बहुत किल है क्या बात है get a little bit closer here but the blue zone will tick away. Aladdin repositioned to 70 hold out this side of hard 10. That could have been very bad there. Alpha 7 able to shut down Damwon Kia. Just came out of the water very, very speedily. भाई ये कॉपी क्यों लग रहा है? Falcons though still in this despite having a rough start towards the end of this game. कौन रहा है? To maybe bring this one back. Circle finally sent us landward. As we will be spared the swimming antics that S2G have been under so far. Onto Powerful, eliminate Team Falcons. On that northwestern side there, you can see just picking up the pieces for Deadeye's guys. Back up to their 3 total players that they have remaining after the res. Liquid swings past. उतरेगा तो सेंसी वाले यही उतरते ना हातिन में हाँ You've got to win this one. Keep your wits about you. Alpha 7 though swam across. 4 players still alive, John. F कर दिया बे स्काउट magic in terms of survival. Scout though 5 eliminations so far. 4 7C. I think players are आ गए बे आ गया मैडम को बुलाया उसने बड़ी long trudge over towards 7C's. एक ही ले साइड में यार पूरी लेन ले ले तो मजा है ना move coming through from वो साइड नॉर्थ की पूरी लेन ले ले तो मजा आएगा तो प्रोन कर रहे हैं क्लोज आ रहे हैं छत के ऊपर चढ़ जाओ अपनी और एसन की फाइट होनी है वो तो नहीं है पक्का आगे होगी या तो यहां होगी प्रोन छोड़ दिया अब सेंटर चला गया 10 minutes or so but it seems like they just haven't opted to go in zone में एक एक्शन मारा था अपने से quite passively and now the circle moves towards them on the south side चढ़ा सर ऊपर उसके लेफ्ट वाले घर पे गया तो इसको पूरे बंदे दिख जाएंगे स्काउट भाई साहब उसके आगे है ना सब दिख जाएंगे completely out of the game entirely and they've decided to wait by the time swing down लेफ्ट वाले घर के ऊपर चढ़ गया तो सब दिख जाएंगे सबके साथ नाइस and this is going to work out अरे कहीं और से ना बोला nade over towards Alpha 7 Mafioso taken down Kelsey सोलो बंदा है जिसने मारा है get to land I mean भाई ये A7 का पूरा गेम बिगाड़ सकता है सोलो वाला एमसीज को फायदा उठाना है बस especially on Sanok could prove to be absolutely crucial और पे जोन नहीं है लेकिन लेफ्ट वाले छत के ऊपर चढ़ जाना तो वैसे चढ़ जाता गिर गया Kelsey spotted by Korea पंच करके वो नीचे उतरा है शायद अरे इन्होंने सेंटर वाला घर ले लिया very much on the swivel now Kelsey's in a गार्ड नहीं कर बट राइट लेन नहीं छोड़नी चाहिए इनको गार्ड करना चाहिए था करना चाहिए अभी भी टाइम है नहीं अब नहीं जाएंगे बट spread their arms here in the circle spread their influence swells hopefully for Vampire Esports in hard 10 nades still pouring in towards Alpha 7 okay 7C they're moving into the back of the push for Bigatron now crunched between Vampire Esports and 7C Aladdin falls back as there's from the barrels of Bigatron spray maybe oh boy kill around shut down Mythic
keeps them alive. अब बताओ ऐसे वाले और ये घर में आके बैठ गए लोग. Goodness me, Mythic has been unbelievable with these spray transfers because you know he's waiting. अच्छा ही है, BTR मारने पे अच्छा ही होगा. वेयरहाउस है, उसकी बॉल मिल जाएगी पूरी. Getting behind this team with this player with Alpha 7. एक और मर गया Alpha 7. Take down Revo, and they're in a rough scenario at this moment. They're not quite in the zone yet, and it has been absolutely unbelievable that they've been able to get this far in the first place. 1 versus 4 on the push against 7C. Repositions inside of the warehouse. Do 7C know that he's made this position? Made this push. Looks like they're still nading on the left extension, but in comes Scout. Looks to be the front man. Pushes into the position that they think he's in. He turns around the side. Liquid needs or two as it is getting some. 7C losing players on the off angle, and Liquid repositions. Nice. Aladdin wants to go for the push, but Sarang around the side. Excellently executed, but Madman's down. Can 7C pick up the pieces? Should be able to back up and move. Considering they're still in the zone, Stalwart, Pika takes out Joker, and Stalwart have been very quiet during this. नहीं हुआ. 3 players, but it's भाई मरा कैसे लेकिन ये वेरोस के अंदर था ना. वही मुझे समझ नहीं आया कि मर कैसे गया. Nice count. But now just Mafioso left alive. They are the survivors here. 8 eliminations, tying up with 7C on it as well. But you're right, it is only Mafioso with so much to do and a long way to run. 7C looking their way. Stalwart as well, putting that lead right down range. Mafioso trying his best not to eat it much. Vampires, they know where the shade is from the blue, and you'd expect it to be so. By Vampire zone hai. Ahead of them. They've not had to do too much at all, and they're starting to get some eliminations too. सुन लिया उसने. It's that 10k. भाई नॉक मत हो जाना स्काउट भाई. But चल. Pelican played. Oh, nice Aladdin. Well, I'll stop that sentence right now, because that is going to even up the elimination points. If 7C go down right now, could potentially be a little bit tricky for most eliminations, but Stalwart pushing on through the 10k chicken dinner. Who can blame them? Champions of the PMWI here. Oh! Can't quite win out the fight. Push करेगा Vampire push करेगी. Just a little bit too. Nice. Vampire का knock दिया Aladdin, nice. Revive दे दे instant. But Ravenclaw might have something to say about it. जा क्यों रहा है Scout? It's very lucky they were able to get that knock onto Schweppes and delay the fight, but Scout gets taken down. Revive हो जाता है यार. Shotgun fuck. With the DBS in hand. What are you gonna do against Ogggggg shotgun? Pushes on in no Sarang. Aladdin down. One player. Nice try, Ray. Nice try. बढ़िया खेला भाई. अच्छा खेला. The chicken dinner on Sandhawk. Vampire esports that may have been slow in the beginning, like a turtle, but towards the end with the मेरे को अलादीन का मूवमेंट सही लगा पूरे इसमें. हर एक इसमें वो उठा रहा है. मतलब ओवर भी नहीं कर रहा है वापस. Scout revive हो जाता, पता है क्या? आगे नहीं जाता देन. हाँ. सारंगी घर में रहना चाहिए उसको. बट वो भी तब रिवाइव होता जब उसने मैडमैन ने नॉक दे दिया था. अगर मैडमैन नॉक नहीं देता तो डंडा बीजी नहीं मिलता. अरे रे साले डंडा बीजी. Honestly, I am incredibly surprised. अरे जितने ये मैच पॉइंट निकाले ना फ्रेंड्स ने उतने उनके टोटल पॉइंट्स थे अभी तक. Money wherever they can at the moment. SUG as well. 11 मैच में. He was like, right. 10 किल थे ना अभी. 10 किल थे और एक 6 पोजीशन. अच्छा 16 ये हो गया और 16 ही थे उनके इससे पहले. India and Thailand going out towards the end. अभी मारेंगे अभी. अब तो मोमेंटम आ गया. अब तो मारने चाहिए. 7 गेम बचे चलो. लास्ट मेरा मारना चाहिए. ये तो जोन था पर और बढ़िया भी खेले यार. सारंग बहुत अच्छा खेला. 2 मिनट का ब्रेक है. चलो दादी और सारंग बहुत. What next? 1 मिनट है मैं बस. चलो गाइस 1 मिनट मैं भी आता हूँ. सबसे बेटर है स्काउट ओपी. लेकिन वो सारी पूरी टीम अच्छी खेली. सब अच्छा खेला. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. गाइस जब तक ब्रेक है TEAMM खा लो गाइस. मैं तो 2 खा लिए.
सीरीज मैच किया। अब फ्रेंचिस मोमेंटम पकड़ के खेलेंगे ना तो अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो गया ना। Vampire Esports, another big win coming out of them today. That's 2 for them. मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ जो कैमरे पे मेरी स्ट्रीम पे चल रहा है वो चाहे तुमने हाइड किया हो तो Back-to-back day of 3 teams getting themselves कैमरा तुम्हारा मेरी स्ट्रीम पे चल रहा है ठीक है मैं हाँ तो ध्यान रखना। And of course the other teams out there who did participate. And speaking about participating, 7C Esports getting 16 points as well, tying things up. It was always scary for them at some point. Like you were talking about one compound in particular north of Hatton, they had to take to try and stop Alpha 7 from getting involved. Oh, but yes. They're just full sent in the middle and try to get a really good spot. Sorry, I was still embodying the soul of John Allen there for a moment. Yeah, you're right. Enjoy I the mean, spot. Yeah. it's thank you. It's ultimately, yeah. There were moments where 7C could have really kind of held out positions, but yeah, it's just. It's crazy in those urban warfare moments where you're trying to move from wall to wall, trying to go from compound to compound, and then with all of that. But Vampires played it excellently to deal with 7C at the end. That compound movement was indeed brought to you by 7C. Continue. But you were talking about actually when we were watching that 7C maybe making some missteps there actually with how they're dealing with Alpha 7. Because Scout wasn't talking to Leaf before they transitioned in towards a different building, so he was keeping them zoned out. But then when they transitioned, they didn't go. जो 10 मैच तक पॉइंट्स थे, एक मैच में उतनी पॉइंट नहीं। I suppose. I mean, ultimately, Blue was pushing them. It's difficult to stay where they were, and then they could have potentially been vulnerable had it been kind of a roof-to-roof situation. So not exactly the easiest situation to be in whatsoever. Yeah, and I do believe also that there's a situation where Alpha 7 do actually win that, right? I think that 7C got a little bit lucky, quote unquote, because there was Kelsey from STG that was like took down 2 players from that location. If they go in there as a 4-man, I think there's a clear chance they win that game. And a cool moment is Kelsey is trying to salvage some money in this game because so early. He's swimming around, getting crates. He comes up on the shoreline, has a gilly as well as an G3 doing all of that. So, yeah, it was difficult for them to spot him, and then he becomes this proper scorer. I wonder what happened if he wasn't आवाज कहाँ से आ रही है? कौन देख रहा है? But one thing I did want to talk about here was the team like after party showdown, right? I think they've had a hard time adapting to this kind of lobby to these type of matches. So, yeah, I would like to expect at least one win coming out from Star Wars, but they just haven't been able to even get to the late game consistently. They're just very topsy-turvy. Yeah, they've bled out in some of these games. Then they've been kind of crunched down on some of these games. They've not been able to catch too much of a break. Yeah. Yeah, well, hopefully in duelists are able to do so as they were leading at the start of the game. Let's take a look at some highlights though from this game. Later up, we will see Kelsey channeling the inner mermaid swimming from box to box, crate to crate to. Map in 8 minutes. I wish we had that on camera. I do have a video of it though, man. Don't worry. No. We can post it up on Instagram. Don't blackmail social me media. This blackmail is brought to you by John Allen. But still, I mean, a rough game nonetheless. He's molding on the sidelines right now. इंडिया से वियतनाम के लिए 9 रुपए में फ्लाइट की टिकट बुक की है। ये कैसे होता है? चलिए थोड़ा सा फ्लाइट में लेकर चलता हूँ आप लोगों को। तो मैं हर रोज की तरह ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर करके टाइम वेस्ट कर रहा था। म्यूट कर दे। ये क्लेम कर रहा था कि 9 रुपए In a very spread split, and I think that's really good for the earlier versions of these circles. Obviously, you had one guy over in kind of the dumpster area on the bridge, actually holding people out as well. So it's a heavy split. It works out for this. Yeah. They did get together when they needed to, which is obviously kind of rule 101 for PUBG Mobile when it comes to these later circles. But again, transitioning through the urban ending is very difficult. I think if it's any other compound, they could have held it. But like Hatton is a relatively big compound. For one whole team, holding all of those angles is a very hard task at hand. It's not a compound. It's basically a city. It's a mini city, basically, right? Yeah. So like, and because of that, Vampire could actually enter from the western side. If they actually had like a smaller compound, maybe they hold it. But that big of a city, quote unquote, is like just too hard to hold on to. Yeah. Well, we can see here though, S2G 1 slot away from getting the full casino, the full slot machine, the full package. Considering they had not much going on in the later stages of the game, that's extremely respectable. It shows how much potential there is in the early moments of the game.
And they've been dominating Paradise today. Like, they won it in the duo show match versus R8. They won it here with, like, 4v4 versus R8 again. Like, they are truly the kings of Paradise Resort. So if I'm R8 and I want to get more money, I might avoid it now. I think when it comes to Paradise, they're doing a good job of controlling the outer wall. और तो हम लिया है. On the compound. Belgrade back. Very good at that. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है. आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है. मसाला. आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स. मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच. सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम. टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच. आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में. गफूर के कबाब में. जय बल्ले के नुक्कड़ पे. रजत की सगाई में. मेरे पास नहीं है.
आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है मसाला। आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। जय बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है मसाला। आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। जय बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है मसाला। आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। जय बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है मसाला। आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। जय बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है मसाला। आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का। हेलो गाइस, वी आर बैक। मैच चालू हो गया क्या? लेट्स सी। मैच चालू हो गया क्या गाइस? लेट्स गो गाइस, लास्ट मैच। क्या ये मैच भी हम चिकन ले पाएंगे? देखो भी नहीं का ये मैच। बोलो ब्रो, पिछला गेम नहीं लिया था मैं। अभिषेक सॉरी बिग फैन। अरे बाय बाय। थैंक यू ब्रदर। देख मेरा हमारा पूरा खाली हो गया, प्लेन खाली हो गया पूरा। चलो गाइस, लेट्स गो। वन डिनर, एक और अच्छा बस मैच। एक टीम है प्लेन में, have all three up there, so I'm disappointed. वो कूद गई। एक डिनर तो अब Way more Netherlands than that. I mean, दो तीन two's like one. तीन टीम। One less than the top guy. बीटीआर का कौन सा प्लेयर आ गया? मैसीर। Unfortunately, we Messi. still have the very 10-15 टीम निकल गया भाई। क्या डॉग क्लैश? which we're all happy about. Oh, Unfortunately, wow. 7 are not. 76 पिक आउट है ये चल। पावर गेट जा रही है भाई वो। He was always smiling on stage, you know, as well. हाँ, वो He was power like hitter. a really sweet guy. अरे सर, बिग फैन। थैंक यू अमजद अली। भाई पोजीशन पॉइंट में 76 को ऊपर दिखा रहे हैं। पोजीशन नहीं है वो। No, I think great sadness. अरे मैं पोजीशन पॉइंट बोल रहा हूं, मतलब किल जो जो भी मैच है रैंकिंग वो जो सब होती किल। है वो है, लाइव मैच रैंकिंग होती है वो, लेकिन वो 76 का हमेशा ऊपर ही दिखाते हैं। Bad vibes to these games. मैच रैंकिंग में स्टार्ट होता है। ये बंदा है इसके पीछे। This game, the last हाँ, वो तो of the main. ओ जी, अरे अरे आशुतोष शर्मा अमजद अली। काश लास्ट कोच आपका फेस कैम ऑफ है। If you are sticking around for that, you might. काश लास्ट मैच अच्छा रहता तो आप लोग भी होते अभी। यस, आप लोग भी नहीं, हम होते। कोई दिक्कत नहीं है। PMWI थोड़ा चोक हो गया, कोई दिक्कत। I'm Sean Connery now. वापस जाएंगे, गेम आने दो गाइस। करते क्या आने दो, गेम तो आने दो भाई, तुम गेम आने दो बस। भाई they composing क्यों? You are one of the best player in IGC. I know I am one of the best player, but watching का क्या है? भाई लोगों ने बताया मुझे इतनी सेंटी मैसेज किए ना एक। होता है गाइस, होता है। कंसिस्टेंट रहूंगा तो बराबर हो जाएगा सब। आई नो रे, मुझे भी बहुत मैसेज है। बोले भाई तुम इतना कोई ना। सक्रिय है, सेलेक्ट हुआ है, तुम्हारी वॉचिंग कोई दिक्कत नहीं गाइस। आप देखकर वो बहुत डरते हैं क्या? इंटरनेशनल खेलना है ब्रो, इंटरनेशनल। Which you should all be doing. ये तो ऐसे हेड मिलता है। इंटरनेशनल गया है कभी? बेटा जब जाओ ना इंटरनेशनल, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, जान दो, छोड़ो। तोड़ के आएगा। भाई बोलूंगा नहीं। सब माइंडसेट का गेम है भाई, सब माइंडसेट का गेम है। Got a question for you, Blaine. Okay. If you had to do an impression of one of the other talent. फेस का फोटो मस्त लगाया था हमने। अरे 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 Would I do an impression? भाई कैसा है ना ये गाइस? देखिए मेरा इतना खराब फोटो लगाया।
Put you on the spot. नहीं मैंने नहीं लगाया भाई. Bro, how to play T3? Please tell. अभी गेम आऊंगा सब खेलेंगे. T1 भी खेल रहा है. Reminded me that at the start of the day for me, I did a great max. T3 के WhatsApp groups वगैरह वगैरह होते भाई कभी टीम कोड बनाओ. सक्षम बिल्कुल बनाएंगे. अभी तो वॉच पार्टी कर रहे ब्रो. Oh no. Oh. आपका काम इंटरनेशनल है. तो बस आवे जी सपोर्ट. Oh, I didn't think it could get. एक पैन के बाय. यश भाई thank you. Keep supporting. BGMA का क्या सीन? ये तो हमें भी नहीं. आ जाएगा. टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा. That was uphill. आएगा तो सही. Rock bottom only has upwards trajectories. Yeah. It's kind of my French is not great, unfortunately. क्या लगता है guys लास्ट गेम डिनर आएगा अपना? Je ne pas parler français. Je parle en français un peu. Hablas español? No. No. That's still French. No, Addy, I cannot speak ये German. क्या पका रहे हैं ये कास्टर? I know this is a multi-language stream. Quality को क्या हो I गया? have to keep multi-language stream. It's the only one I can. अबे सेवन से आएगा बंदा. पकड़ने यार उसको. अरे माँ कसम. अरे मैडम दिखना नहीं है गाड़ी के सामने. भाई. अरे आगे दिया इसने भाई. सारंग. सारंग. Three-way engagement on the positions here for 7C versus Rad. अग्गू हो गया गाइस थोड़ा सा कोई बात नहीं. Just yet, no one quite landing those shots, but Rex cut off from लाइव वाचिंग ग्लिच है या अच्छे प्लेयर को कम ही आती है? अच्छे प्लेयर को कम ही आती है ब्रो. ग्लिच नहीं है वो. It is what it is. अब लोग कितने टाइम? 1 और 2 मंथ. Another European language, albeit a dead one. कुछ भी हो सकता है ब्रो. 1 2 3 4. Well, good for One, him. 7C 2 3 4. though. Sarang continues to जाओ भाई सारंग पे जल्दी. गया ये. बच गया. सेलिब्रेशन के $2000 ले गया भाई. एडवांस ना? हाँ. पार्टी. एडवांस लेके गया? हाँ. नहीं सारंग ने भी लिया था पिछला गेम. भाई इनके मजे हैं. अरे मैं भी गया ऐसा कुछ. रे क्या भाग रहे हैं बे ये लोग तो. बढ़िया चलो. चार बंदे आ गए इस पे. Looking for a little bit more. बहुत बढ़िया मैडम. Squad wipe. Kato goes down. Madman able to find it flush from Sarang. 7C moving. बढ़िया मोमेंटम आ रहा है गाइस. Sarang. क्या नाम है? Sarang. Madman. Yeah, you love to see it. There's the earnings on the screen. अलादीन को तो पता नहीं कुछ अजीब ही बोलते हो. 70k. Ogggggg. And 70k in the bank. I know that makes Seven Worlds Gaming happy to see. पैसा ऑर्डर 16k हो गया. I mean, those guys though, they've kind of been scrounging some money where they can, and I respect it, man. I respect it big time. You know, if you can't take the chicken dinner, take what you can elsewhere. I mean, पकड़िए मारो भैया राड को. That's what they do. To be fair, not only, but you are one of the best. That's what you're saying. I was emphasizing your point. Are you also saying that? Sorry, who? Yeah, okay. They let you Interesting. in. Yeah, they do. I don't know where you've come from. विज तूने भी सॉरी बोला? तेरे को पता है तूने और कास्टर ने एक साथ सॉरी बोला मेरे स्ट्रीम पे. Circles already hit. Absolutely, we have to remind you all at home that these games are accelerated. We want the pace of these games to be fast, quick, and center of the circle. भाई कैसे भगा रहे सब गाड़ियां और सीधा सीधा जा रहे हैं. देखना भाई इतना अजीब है. to make their way into the circles pronto. Los Leones on the western side do have Dead Eyes guys, and all the teams didn't have a lot of time to loot up, but there is a fair few decent paths of rotation to get into this one. A few of them using the eastern roads. That's R8 who are still making their way down. D77 though, he is a bit far out. He's still in El Azahar. The rest of this team, you know, asking him if he can hurry up just a little bit. On the back foot, maybe. Hopefully boosters on the cards. So they'll need to heal up. Because he's got one energy drink there in the pocket and a little bit of a booster there still on the bar. See, still in the first phase though, so might need to get a little bit more, and they're still a way out. 3 first aid kits though, they will be absolutely fine. It's still early. Circles, western side. A little bit more open than the east right now, though Enigma Galaxy do have that west road on lock. PTR chicken है ये गेम. अच्छा. Closest engagement, I think you can see right there. मेरा मार है bro. सेंटर में देख के मत समझो. And 7C. और मैसेज शिफ्ट आते हैं ना, रिपोर्ट फट जाए आदमी. One of the
players there. But circle देखना कैसे shift देता है. Rods in front of A7, Revo immediately Marines off to the right-hand side. Sadat drops out for just a second, maybe to take some shots, but decides against it, realizes, you know, they're just in as much trouble as Alpha 7 is right now, trying to get into the zone itself. But we are heading down towards Chumacera right now. Enigma Galaxy rotating dangerously close to Dam1 Kia. Not actually taking any shots as of yet. I think both these teams concerned with their own well-being, and this is a gentleman's agreement that we shall ride into the zone itself. I take it back, Lord. Road पे लेट के स्प्रे दे रहा है. This is not how this is meant to go down. That's against the code, unfortunately. But fortunately enough, doesn't actually manage to land too many shots. Doesn't really do too much to slow things down. Just diverts course slightly. Looks like well, they're still on the warpath. I mean, they didn't get the memo that the duos game is next game. They are going to be playing with two. Flaming car. अभी change नहीं कर रहा हूँ. Have to try and regroup. उन्हीं के साथ बैठ जाएगा ना. Keeping himself nice and warm. और ये बगैर ऐसे फूट गया सोच. Warming the hands at the fire. Very nice, very nice. चलो क्लोज आइए हमारी इंडिया की टीम. अगर ये डिफेंस निकाला तो आ जाएगी थोड़ा. Because it does have a bit of a Circle come back. S2G rocking up the Dead Eyes guys. Silas. ये S2G तो इतनी aggressive टीम है ना भाई सच्ची में. Next level. Shifu needs to have an impact from the off angle here. It is outnumbered right now for the Dead Eyes guys on their current position. True lover. वो बंदा पिटेगा पक्का जो S2G का लेफ्ट में है. Side there trying to keep this beautifully found there. An off angle for Joker at the back there, all the way across the way. भाई 7-6 का गेम हो सकता है अगर instant circle center घुसे तो. And still out led. Falter on their push. सीधा अंदर जाना चाहिए सर्कल के सीधा. Still here, John. No team eliminations have come through as of yet. Just drops out and lays Scry low there. Found actually over on Tachari, who will have to drop down. I think Vampire Esports weren't too far away. Knows where Shifu is now. पुश कर देना चाहिए लोग को. S2G के जो दो बंदे बैठे हैं हाँ बढ़िया. On that angle, a nade over from Silas. Still not quite under the watchful gaze as Shifu swings around the side. Repositions the buggy, potentially a little bit of cover there. S2G wanted to go for it. Actually एकदम कॉर्नर में थे एकदम लेफ्ट ऊपर. हाँ वही देख रहा मैं. सब जल्दी अंदर आना चाहिए तुमको. वही स्लो है आपकी. हाँ वही स्लो. Painkiller, one energy drink. It's really rough in terms of stims as well as medical supplies. This would be a fight that would be nice to win. यार क्या कर रहे हैं S2G फाइट लेना है तो लो कर रहे हैं. इतना टाइम क्यों लगा रहे हो एक फाइट पे? नॉक करने के बाद भी. Certainly outlasting S2G. Move just a bit further into the zone here, so they can D मारेंगे. going for a little bit longer. So फ्लैंक पे फ्लैंक बनाए जा रहे हैं बस. Ricardo, Stalwart, a little bit unhappy with this one. नॉक किया जाके पुश कर देना चाहिए था. इसको ऊपर चढ़ेंगे एक दो नॉक दे देगा तुम्हारे. उसी. Raise. बेटा वाह. The first airdrop. कल पे तो पुश ही नहीं कर सकते हैं भाई. I was focused on the engagement. I did. Yeah. Was it? I gave him a little golf clap as well as Ralph picked himself up. A nice little airdrop. That's on the western side of the map, directly opposed to this engagement here, which is right on the eastern edge. R8 are moving of this engagement. I wonder if we're going to have the back and forth between R8 taking down S2G and S2G taking down R8. Could be amusing, but it looks like R8... Cam 7-6 का नहीं था, पीछे बैकग्राउंड पे वो लिखा 7-6 था. Kelsey on the roof. Cam भी 7-6 का था शायद. नहीं. लास्ट मैच आज का. वाह. के बाद एक वो भी होगा. तो मैच जो. अरे वो कौन देख रहा है? अरे वो वैसा है वो 7-6 के सामने वाले बेंच पे बैठे हैं ना वो लोग. जैसे अपन नहीं था कि बोर्ड था लेकिन. समझ गया नीचे बैठे ना 7-6 के वो लोग. हाँ. And it's not going to be super easy to make that push unless you can get a little bit of a squeaky, cheeky play. ओ भाई अलादीन कहाँ पहुँच गया? In this fight now though with भाई full occupy कर लिया भाई लोगों ने. It's going to be difficult to get him down without. ये 7 वाले देख अल्फा 7 कितना स्पीड खेल रही है. Already the blue has made its way over to the circle, so it is not waiting around for any of these teams. It is go time. 7 Dead Eyes और R8 से तो ऊपर आई सकती है मैच में. ओ अल्फा 7 को मार दो भाई. A7 रिग्रुप कर लेंगे अब. हाँ वो एक. तो ये जाते मार दो ना उसको साथ में मारना चाहिए. माफियोसो बैठ गया गाड़ी में. जाते मार दे. फोड़ दे गाड़ी. ये S2G को तो बैठना ही था. ये क्या खेल रहे हैं पता नहीं.
the openings that need to be found. देखो देखो क्या हो रहा है Somehow pushing through the hailstorm of bullets. ट्रू लव ने भी सेम किया था एक मैच पहले और उसने उस ऑपोजिट हो गया. Who's this? Someone else coming in? Potentially? No, Shifu. अच्छा ये अभी भी छत पे बैठा हुआ है. Oh boy, knock finish दे दिया. We're coming from. Now they're looking to try and mount up this pressure. Nades potentially popping out through the windows. Kelsey trying to swerve around the side, and Silas still going out in the open. तो कमिट कर जाते हैं ये स्टोरी वाले. जान जाए तो जाए. I'll tell you that now. Kelsey though. वो पता है कुछ और नहीं होता. Continues to send Deadeye's guys. कोई टीम नहीं है ना शायद S2G नहीं है. Will have to leave. Kelsey can almost sacrifice himself here for the greater good, so that potentially Silas is able to leave. भाई वो सोचो भाई वो कौन सी क्या मतलब बीटी दे रहा है भाई. भाई मैडमैन नॉक. एसटी का ऑलरेडी एक फिनिश है. हाँ किससे हुआ? हाँ रेड से रेड जो भी है. और नाइस नेट भाई. ये नहीं लगता ना ये. लग गए थे भाई रीच. लॉस नहीं. Ricardo killed Pot. Silas still alive, but on the northern side and मर alone गया. S2G. भाई ये There's your sacrifice made by Kelsey. Silas drops. वो 3 मैन है. ST ज़ोन ले ली. To run away here, but he has locked them down. नॉक हुआ ना अगर एक और इनका तो बेटर. Top action. वो ड्रोन नहीं ले रहे भाई वो मारने का वो फुल बैक. अरे अलादीन नॉक. किससे? अरे भाई आप आगे देख रहे हो क्या? वो तो पहले से नॉक है. एडमैन नॉक हुआ था अलादीन अभी नॉक. अच्छा Nice shots. लग गया भाई मैं अलादीन अकेला खेल रहा था. हो गया. Found shots. शाउट को भी नॉक. अबे बहुत बढ़िया. वेल डन हो गया. सारंग लगा लेगा. सारंग मारेगा भाई. लेट्स गो. 7C suffering heavily right next to Storm. Oh shit भाई दो एक यार अपने मार गए भाई. And that is the end of Storm. 2 पॉइंट है बस. Made over the top. Oh, it was Vampire Esports who chimed. भाई किसने मारा है? एक वैम्प, दो वैम्प, ST, दो ST. With our 8 Falcons. एक R8. Bando got nice on the approach. पे थे ना वो लोग. Yusuf इसी with a वाले. very nice nade here. Falcons only have 2 players. ये क्या बोलते हैं उसको? They are sending. क्या? वो कॉर्नफ्लावर पे थे कहाँ थे? कॉर्नफ्लावर पे थे कहाँ थे वो भाई? Low HP. कॉलीफ्लावर था. Heal off as of yet you can see Prestige tries to pop the first aid but it's just too little too late. Good 7C. The clutch maestro hits. वाह जंप शॉट नहीं जमता नहीं डालने का नहीं मरने का. गुड लोग ने 2 किल अच्छी गुड निकाली. बीटीआर इतना रो रही होगी ना हर जगह से कौन बात. बीटीआर चर्च और कलर स्प्लिट करा था. वो एक साइड का कलर रखना था. एक कलर स्प्लिट था. उसके बाद उन लोगों को हर जगह से पड़ गई थी. Vampire Esports and Alpha 7 कल कमबैक करेंगे. with the fisticuffs at the moment in these games. Coming off for Kenzie where it was one or the other there to get the chicken dinner. ओ नाइस स्लैम यार एनजीएक्स का. भाई मैं रिफ्रेश कर रहा यार. कुछ पहले रिवील दे रहा सब कुछ. सॉरी भाई मैं रिफ्रेश करता हूं पहले. मैं पॉज कर रहा हूं. हो गया मैं कर दिया. हमने आगे कर दिया लाइव. तुम्हें वो दिख रहा है मिथिक दिख रहा है नेट लेके. उनका मैच चल रहा है 4. हमें लॉर्ड दिख रहा है नेट दे. अभी तो मुझे हां ठीक है बराबर है. रेवो मरने वाला है हमें ये दिख रहा है. It's unlikely to get their boy back up again. भाई रॉफ ने वाला सीन किया. क्रॉसिंग देख रहा वाला. Causing huge problems. Vampire Esports have problems their own though. As down one Kia swoop into the compound underneath them. Leapfrog हो गया वो लोग कैसे हैं? ये क्या करेंगे यहाँ से? अब एसटी यहाँ से स्लैंड दे दी क्या अल्पसन पे? Compounds inside this circle. But also this next shift where it goes, especially with the cross. प्लस के पीछे जो रिजो दिया अगर वहाँ पे इन लोग खेल सकते तो अच्छा है. शेक खाली है. बट उसके पीछे राज से भी. 2 मिनट नो राड. जोन में नहीं है वो भी आ रहे हैं. अरे ओह नाइस कवर भाई. बच जाएगा. नाइस कवर. And they will be able to stay in. काश मेरे टीममेट भी दे पाते. या फिर काश मैं अपने टीममेट को दे पाता ऐसा कवर. What the fuck only 5 watching. It is what it is bro. अरे मेरा तो फोन स्विच ऑफ हो गया. और असली चू मैं. That वाला फोन in the game. ये कहाँ से नॉक हो गया? टॉप. Vampire Esports sending shots. फिनिश करके भी आ गया भाई टॉप को. Bigatron really far away there. Oh! From Alpha 7 as well. Shreps taken down a peg. Hopefully Vampire Esports can get that one back up. Here's a replay of the crash. My guard उड़ा दी इसकी. He does go down.
आजकल भाई प्रॉपर वो करने पे भी ना, मतलब लेटे हुए बंदे को उठाने पे गाड़ी से बंदा मरता नहीं है बंदा भाई बीटीआर बट ऊपर नहीं हो। अरे भाई दर्द में अभी बीटीआर बहुत। बेटियार अभी बहुत ज्यादा दर्द में। बस सदमे में निकल रहे हैं वहां से कि हमने क्या कर दिया। Genforce trying to pop a nade in a little bit Boom. longer on that nade, but might do the ओह सुन से मर जा, सुन से मर जा, सुन से मर जा। गया सुन के मर। Genforce क्या ना गया सुन के बाद takes it away. एक बैंडेज अबे भाई अरे बेचारा एक बैंडेजेस। व्हाट्स एज लिमिट इन स्पोर्ट? अरे भाई ये क्या है? कॉपीराइट नहीं पड़ेगा देखने से, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल तुम 16 के हो जब खेल सकते हो। तो पढ़ने में क्या ये है? अरे ए साइड पुश कर रही है एनजीएक्स पे और नेट कुक करके बैठ गए। क्या उसका ऑप्शन नहीं है? Good smokes. Once again, the train comes through. 3 लोग ने गन ले लिया भाई इनको इतना प्रॉपर वो लोग ने यूटिलिटी वो कर रहे हैं ना। Strong for themselves. Molotov out the window will prevent the push up just a little bit, and with the confusion laid bare by the smokes. भाई दरवाजा मार देगा, मार देगा। Things off strong. Oh! Heavily कहाँ? injured now. वो कह रहा बस लग जाए, मैं दुआ करता हूँ। नीड हेलो कोच, मेरा फेस कैम देखो। हेलो नीड एक मिनट रुको। ऊपर ही है ना? Takes a little bit of damage from a nade around the side. Carrillo up the stairs. A little bit of rest. इधर यार पैसे पहुंच गया, राउफ को नॉक दे दिया भाई। As Ralph goes down first, bringing the numbers. अल्फा ने इधर मार दिया ने लोग को। Is gonna get traded off. The flush is good. नाइस समुद्री नाइस। Allowed to sneak through the gaps. Only भाग one. गया। एक भाई इतियाद Carrillo up the stairs. Potentially. हबीबी If the doors अरे हो। are going to keep that cover. हबीबी Opts instead to pop that Molotov down and give themselves a little bit more cover. बेटियार वाला पत्थर पे आके बैठ गया भाई। कह रहा हूँ बाहर आओ। अबे एनजीएक्स 2 कैसे दे गए वो? नहीं एक दिया एक। बीटीआर ने उनके लीपफ्रॉग दे गया। गेट किक कर दी भाई। BTR have moved up to this position. They've given ground to Vampire Esports who have now. चलो 1v2 लेट्स गो स्नाइपर से। I mean, they've been here for such a long जोन में नहीं है ना बीटीआर बट It's been very difficult not to take all this space, but the start बटा बहुत ओए of the Vampire starts to envelop the rest of these teams. It's a question of whether they can continue to dominate. गुज्जा Still alive though. और और किस्मत क्या बात है भाई। भाई मैन का गेम है। और अभी भी बचा सिंगल एचपी पे भाई, देखिए जरा। So bare, so barren for them. मैन का गेम भाई, मैन का गेम। Vampire Esports. वैम्पायर लास्ट में निकलते सेंटर से एकदम। Control the quadrant. They're gonna have. क्या ही जोन है? अरे हाँ ना भाई, गलत ही जोन था। This will be beautiful stuff for them. They'll be happy with the money that. और ले लिया तो। यार फिर भी आ गए टॉप 3। तो वैम्पायर का डिनर है। Well, so there's potential for even more cash on the line for them. Beautiful nade from Come Soto, on. from down one Kia. And another. 3 players still going. Oh, didn't quite find anything. भाई बीटीआर सर्वाइवल स्किल्स Over onto Ravenclaw. Song you imagine doesn't have. ओजी में चांस दोगे किस चीज के लिए? Maybe even then. कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं ब्रो। फ्लेक्सी फिनिश हो गया 3 बंदे। बीटीआर लेफ्ट आ गए भाई इनके। They take their chances there as well. भाई बीटीआर ने अलग कर भाई गेम में जा सकती है अगर बीटीआर। सोच वैम्पायर सैंडविच हुई तो डांगमांग और से वही ले जा सकती है, तो वही होगा। कि वैम्पायर के जो 2 बंदे अटके उनको मार सकते हो। They'll take the north, and now Vampire Esports are going to have to. वही होने वाला है भाई। As a 4 to prevent these teams from बीटीआर अच्छा starting to crush them between 2 walls of players. बहुत अच्छा है। डांगमांग को तो पक्का क्रॉस करना ही है। 1-2 कैजुअलिटी तो दे ही देंगे वो। The nades continue to just bobble over the top of the roadside from down. बेटियार ने हर एक क्वाड्रेंट क्लियर करा है। Zone is pushing. They will have to move. The smoke wall has been established. They will push. तो कुछ भी हो जाए जंप बच नहीं बोलते लोग। Looking to try and draw some fire potentially, trying Thank to you, get भाई। his teammates to refrag. Jumping in, trying to gather info. The smoke starts to clear. बीटीआर का एक प्लेयर कहां पे गया था? Across with the car. Fabian वहीं पे मर गया शैक पे। शैक नहीं वो पत्थर। अरे नहीं वैसा नहीं। स्मोक जल्दी चला गया वरना वो निकाल लेता पे। अरे टीम छोड़ के कौन सी टीम में गया था? नहीं गया नहीं था लोग रिटायर होने का। माइक्रोबॉय। ओ माइक्रोबॉय हाँ। उसमें क्या था? माइक्रोबॉय कहां से आ गया? माइक्रोबॉय ने छोड़ दिया था ना टीम, वो बोल रहा है। अच्छा। अरे कोई दूसरी टीम में गया था। बीटीआर चिकन
versus Oh, BT. Down. Lotus 1v2. Last player going in. Fluker Vampire gonna versus one against Luxy. क्या chicken? No bro, बेटे, I'm not chicken. Longest standing members on this roster made the name for Bigatron. अबे या तो revive कर दे या तो All day, all tournament at this after party showdown. डेढ़ It's बड़ा now इसकी the move. time that they take that 10k and Nave Oh, pulls it rest to the in. top. The Rezzes are coming Pieces. through and they are denied yet One again. more chicken भाई, क्या बात है? Vamps. Quick on the swivel. तीन चिकन मार दिए डेल्टा तो है भाई. अरे डलता भाई. फिफ्थ प्लेयर के लिए फिफ्थ प्लेयर है हमारे पास ऑलरेडी ब्रो. भाई मैं हूं ना ओजी का फिफ्थ प्लेयर. सही बात है भाई. मेरे को रिप्लेस करोगे क्या बताओ? भाई बताओ. कर सकते हो. क्या किया यार वैम्पायर ने स्मोक करके उधर से बिटिया से बची पहले उनको मार डांगा उनको. तो बिटिया में हैगा है लास्ट में हो जाता हाँ क्योंकि बिटिया मार देती वहां पे. मार देती So much. We've praised them so many times. वैम्पायर का की टीम है? We've got an वैम्पायर वहां की है ये अपना थाईलैंड. थाईलैंड. 23 points है. I was wondering if I was the Frenchman there, and then I realized we have Max, and I also realized I have no ability to do accents whatsoever. मैं करूँ रिप्लेस भाई को. But anyways, लगता तो नहीं भाई आप कर पाओगे लेकिन ट्राई करने. ना सर आप ओपी प्लेयर हो. अंडरडॉग से वहाँ आने में टाइम है अभी. अरे बिल्कुल. चलो गाइस ये तो हो गया. डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है. रूटर में आ जाओ. रूटर पे 1-2 मैच खेलेंगे फिर बंद करेंगे. ठीक है आ जाओ फटाफट से. यहाँ पे यूट्यूब की स्ट्रीम एंड करता हूँ मैं. चलो बाय गाइस बाय पीस. चैट मिस. कौन सी चैट मिस? नताशा ओपी है. ये कौन है? हेलो जॉर्ज फ्रेंड्स. हेलो. चलो गाइस आ जाओ. रूटर पे शूट है. आप फटाफट से लिंक पे क्लिक करो. डायरेक्ट आपको वहां पहुंचा देंगे. फॉर श्योर ब्रो. कभी ना कभी खेलेंगे. उम्मीद है एक टाइम मैं खेल पाऊंगा आपके साथ. भाई बिल्कुल खेल पाऊंगे भाई. मैं भी ऐसे ही था. मैंने भी the importance of keeping even just a little bit of utility Guys, here and there because being आज के लिए बस इतना ही. अभी अपन जा रहे हैं रूटर पे. रूटर पे कंटिन्यू करेंगे स्ट्रीम 1 आवर के लिए. तो आपको आने तो आप आ सकते हो. Very important. You had very predictable sight right from the other side. So if you do not have that nade, I think that he could have picked up the 1v2 pretty easily because you know exactly. Join guys. And I think he had the better equipment because looks he had an Ogg. True. ये शक्ल नहीं दिख रही होगी guys आपको. He's a laser. So I don't really want to take a 1v1 against that, to be honest. Yeah, I've been learning quite well not to take 1v1s pretty much against anyone because I'm terrible at PUBG Mobile. But still, I mean, it was at least great to see Bigatron step up. The funny thing was we're watching the match in our room, and we have the Indonesian talent room next to us. We're 5 minutes ahead of us because we're on a little bit of a delay. And we hear them scream, and they're like, oh, I guess Bigatron's doing well. I guess they're going to be at the end of the game. But yeah, in the end, like they still weren't able to close things out. And I don't remember where they actually stand when it comes to the match awards ranking. But I feel like they're one of the lower teams. They indeed are, yes. They were kind of very middle ground in terms of the overall placements, but it was pushing them up enough to kind of negate where the overall rewards from money came up. क्या बोलते हो? Were very low. प्लीज आज तो नहीं खेल रहे guys. I guess. क्या बोलते हो guys? ये जो फन मैच है वो भी देखना है क्या? That being said, देख के जाते हैं. यार आप लोग बोलोगे. Page question mark. Star Wars still taking time, even though they didn't get the wins, they still bring in some money every. आप बोलते हो तो देख के जाते हैं. Still clearly have like a game plan in mind, even though it's not like सिर्फ आपके लिए. oriented. They still get some money, right? So you can't really argue with that one too much. Yeah. But I feel like that domination we saw in the first week at a Stalwart has just completely disappeared. So guys, where have they gone? We were expecting. Should I watch more? Major changes. Should I watch the last match or? Main tournament compared to the after party show now. Everything is different, right? बताओ. Not too surprised, but one thing that has remained consistent though is the fact that Vampire dominate not only the rankings but also these extra prizes, the game awards and eliminations. Teams eliminated too. I mean, yeah. I mean, 500k was not enough for them. Yeah, and you know what? They might come out winning this event as well. I mean, you think about PMGC down the line, Vampire Esports are definitely putting a bullseye on their back for all the teams to come for. Especially since we saw Alpha 7. So guys, रुकते हैं अभी वीडियो पे बंद करते हैं स्ट्रीम. मैं जा रहा हूँ स्ट्रीम करने ट्विटर पे. So you all can तो जिसको स्ट्रीम देखनी है और मैं 1-2 क्लासिक खेलूँगा कल. जॉइन रूटर
चैट में मैंने लिंक पिंग कर दिए। अब लूटर पे स्ट्रीम करेंगे अपन। आ जाओ इफ यू गाइस आर कमिंग। तक चैट देखो, मैंने जब तक चैट को कर दिया, ठीक है? आ जाओ। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? जब तक चैट आप जो ढूंढ रहे हैं वो कर दिया मैंने, वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था? ईरानी कैफे में। गफूर के कबाब में। दही बल्ले के नुक्कड़ पे। रजत की सगाई में। मेरे पास नहीं है। आखिर गया कहाँ मसाला? आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है। मसाला आ गया है टू यम पोटैटो चिप्स। मसालों का पंच दे हर बाइट में यमी क्रंच। सैचुरेटेड फैट्स में 40% कम। टू यम पोटैटो चिप्स, हर मंच में पंच। आखिरी बार कहाँ देखा था?